Okay, guys, I think we have waited enough. Now I'm getting started. Uh, okay, yes, sir. Good morning. Yes, sir. But we have to download yesterday. You gave us a link. So you can ignore that, Nista, if you haven't done. I gave those links only for study. That's fine. Okay. So guys, agenda for the day is the hands-on on the Spark. Okay. But what I'm using for hands-on is cloud. Okay, AWS cloud. So if you look at my screen, I am not using the virtual machine because A, the virtual machine is slow. It does not have enough resources to run Spark. It will be slow, जैसा कि कल हुआ था, right? It was hanged. And also the Spark version was like older, which was like 1.4 or 1.6. But I want to use the latest version, which is Spark 2.0. Okay. Uh, the another issue that Nistha you faced was you are not able to connect to Hive using Spark. Remember, the Spark object store was not able to connect to the Hive meta store, right? So all those things are actually they're not working on the VM, right? So what I have done is I have created a machine for you guys on Amazon Cloud. Okay, I have created a Hadoop cluster. I have created a Hadoop cluster on Amazon Cloud. This Hadoop cluster contains what it contains is one master node and two slave nodes. In total, three nodes it contains. Okay. I have installed Hive, Vue, Spark, Zeppelin, everything on this. And what I'm doing is I'm connecting to this cloud using something known as Putty. I don't know if you guys know about Putty or not. So I told you in one of the class that you can download Putty. Okay. So if you look at this black window, how I have accessed this or how I have opened this is using Putty. So this is the Putty tool. यहाँ पर मैंने अपने क्लाउड का आईपी एड्रेस डाला. ये जो है मेरे क्लाउड मशीन का आईपी एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे, या होस्ट नेम है, जो भी है. मैंने वो डाला और उसको ओपन कर लिया. Then I clicked on open. It asked me for some credentials. I passed on that credentials and then I'm inside this machine. I'm inside this Hadoop cluster. Okay. So far, any question like before I proceed? Yes, Karan. So that's what the problem is. What you can do is you can use your virtual machines, try to do the hands-on in parallel. Some of these commands will work, some of these will not work. So during the session itself, you can tell me which is working, which is not. Okay. You won't be able to work on all of these because it's the latest Spark. Okay. And there are few things like Spark R, which is available only on this machine, not on your machines. Okay. Those of you who have AWS account, they can work in parallel with me. They can create a Hadoop machine. I can help them creating a machine, but for that you need your own account because this will cost you money. Okay, so this will cost me somewhere around 3 to 4,000 for next 3 to 4 hours. So that's my personal account. Okay, so if you have your account, you can create it. It will cost you around 2 to 3,000, or I would say 1,000 per hour. It will cost you. Okay. Yes, Gulzar, this is not EWS, this is AWS, Amazon Web Services account. Okay, so this cluster will cost you. Okay, so you have, but anyone who want, I can help them create this cluster if they have their account, but you need to add your credit card to it. Okay. Okay, guys. So
Any further question? So Karan, yes, you won't be able to do everything which I tell you in this session. Ideally, only 50% of that you will be able to do. Okay. But focus on the learning and yeah, we'll try what best we can do in the hands-on. Any other question, anyone? Perfect. पुटी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था एक बार पुटी क्या होता है उससे हम SSH कनेक्शंस बनाते हैं SSH मतलब सिक्योर कनेक्शंस बनाते हैं हम ओके सो लेट मी फर्स्ट एग्जिट दिस विंडो ओके अगर अभी आप देखोगे ये आप सबको सिमिलर दिखेगा जैसा आप लोगों ने अगर VM ओपन किया होगा सबको सेम ऐसा ही दिखेगा राइट user Hadoop logged into this particular server okay and here now you can run ls command because that's like what it's Linux local Linux right but now on this server or on this cluster I need to do Spark so you did yesterday Spark shell all of you did Spark shell yesterday right so you open the Spark shell and there you can work on the Scala and Java coding. In Scala, we saw the concept of var and val. We saw the concept of immutability, and we saw that Spark version was 1 point something, but the latest version is the Spark 2.4. Okay, Scala version you have 2.10. I'm using 2.11, so that's almost same. It's using OpenJDK. I told you because Java is costly, it's paid, so it's OpenJDK. Java 1.8 as I am telling you कि ऐसा नहीं है कि Java 15 आ गया है तो Java 1.8 पुराना हो गया है. Java 1.8 is very much stable version and it is going to stay. It's not going away. Okay. And I told you you can create a variable like val. Say you want to say okay val name equals to you say okay it's Rahul. And it automatically infer that this variable name should be of the kind string. Okay. And then you can reassign, you can try to reassign a value to this variable, say Karan, and you will get the value that reassignment to val. It's not possible, right? Because it's an immutable object. Okay. And RDDs, data frames, they are all immutable. Okay. The core data storage elements in Spark are RDDs, data sets, and data frames. Okay. So they are immutable. Now I am coming out of it. I'm coming out of this. Okay. So I am now out of the Spark shell. Now where I need to go is 1 second. PS is there, bash is there. 1 second. PS this bash. It's bash. Bash. This retail hyphen. Okay. Okay. So now you have to go inside PySpark. Guys, type in PySpark and you will be inside PySpark. Okay. When you go inside PySpark, we saw Spark version will be same, but Python version here is Python 3.7. आपके केस में it was I think 2.6. The another important thing to see here is we are getting a Spark session here, guys. No Spark context. I told you, right?
In Spark 1.0, there was a Spark context. In 2.0, they have given Spark session. वहां पर दो अलग चीजें होती थी, एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता था और एक सीक्वल कॉन्टेक्स्ट होता था. उन्होंने उन दोनों चीजों को मर्ज कर दिया और आपको एक चीज दे दी जिसको कहते हैं स्पार्क सेशन. फाइल्स भी इससे रीड कर सकते हो और टेबल्स भी इससे रीड कर सकते हो, सब कुछ इसी से कर सकते हो. तो स्पार्क ऑब्जेक्ट दे दिया. ठीक है, मतलब स्पार्क डॉट सीक्वल अगर आप चलाएं तो देखो स्पार्क डॉट सीक्वल भी चला सकते हो. यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पार्क दिस इज स्पार्क सेशन डॉट सीक्वल, पाई स्पार्क का सीक्वल ऑब्जेक्ट है ये. इट्स अ ऑब्जेक्ट, मतलब एवरीथिंग इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सो इट्स अ ऑब्जेक्ट. Okay, very good. Let's come out of this also. So there was a Spark shell, there was a PySpark, but then I told you one thing. Hello. Guys, 1 second. No? Okay. Sir, are you running queries in the Cloudera or the Eclipse? So Gulzar, I told even in the starting that I'm not doing anything in the Cloudera. I'm not doing anything in the Eclipse. I'm using Putty. I am doing everything in the Putty, and using Putty, I have opened this black and white window on my local laptop. So if you look at, this is my local laptop, Gulzar. So you see, this is my local laptop. I am not inside any virtual machine. I am not on any server. I have opened this thing using Putty, this black and white window. So this is running on my local laptop. And from my local laptop, I am accessing the Hadoop server, the remote server. रियल वर्ल्ड में, रियल प्रोजेक्ट्स में हम ऐसे ही काम करते हैं. जब हम रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो हमें कोई वर्चुअल मशीन नहीं मिलती. हम अपनी मशीन में पुट्टी के थ्रू रिमोट सर्वर पे लॉगिन करते हैं, सारी कोडिंग करते हैं वहां पे. ओके, इन रियल वर्ल्ड वी वर्क लाइक दिस ओनली. वी यूज पुट्टी, we log into that machine and work from our local laptops. We don't get anything like VMware or nothing. Okay. Nahi Gulzar, it can be anything. Your server can be AWS, it can be Google server, it can be a Microsoft server, it can be Red Hat server, it can be any server. I am using Amazon server. It can be Microsoft, Google, any cloud, Azure,
There are lot of clouds available in the market, right? I told you even one of the class, all of you to study at least the name of these. Guys, I hope you know what is AWS, what is GCP, what is Azure. At least you should know what these things are, right? Yeah, that's a good point, Nishtha. Uh, uh, so you're talking about the local laptop or you're talking about the server, Nishtha? Sir, most of the PCs that are connected that the employees are using. So in offices, they don't need Windows. Like they only need that software which they need to work on. So what is the need of Windows? So they might be just having, let it be server or let it be the local computer when they have to work on that particular uh, operating system only, when they have to do programming only. So why do they need Windows then in that case? वेरी गुड पॉइंट. सो निष्ठा देखो, पहली बात तो ये है कि ऑफिसेज में आपको विंडोज मशीन ही मिलते हैं जो पर्सनल लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है. क्योंकि अब मान लो आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपको पाइचार्म भी चाहिए, आपको स्पाइडर भी चाहिए, तो वो, या आपको एक्लिप्स चाहिए जावा की कोडिंग के लिए, तो ये सब तो आपको अपने लोकल पे इस तरह से दिखेगा ना, तो इट विल हेल्प यू बिकॉज विंडोज इज वेरी यूजर फ्रेंडली, राइट. तो पहली बात तो ये है कि ऑफिस में आपको मैक या विंडोज ओएस ही मिलते हैं. मैक का भी ऐसा ही यूजर इंटरफेस रहता है, तो यू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड यू कैन वर्क ऑन देम. You don't have Linux for your day-to-day work because it will be very difficult. एक ब्राउजर तक खोलने के लिए लिनक्स में आपको कमांड चलानी पड़ेगी. ओके, दैट्स वन थिंग. बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्वर जो मेरा है, सो दिस इज माय सर्वर, राइट? सो this is your local machine, but this is your server. Now from your local machine you need to connect to this server, right? A remote server. So remote servers normally are Linux machines, remote servers, because Linux is very secure. So your remote server like Hadoop, Spark, they run on Linux servers. So from your local laptop, which is a Windows machine, okay, you will use a software like Putty. So from your local machine, you will use something like Putty that will help you to connect to the server. But the server is running on Linux. Okay, Mr. Getting this? So local machines will be Windows or Mac, where you will have Putty software installed. Using Putty, you can connect to your Hadoop servers or the Spark servers, or even the other different kinds of servers which are there. Okay. For example, NoSQL servers where you have Cassandra or MongoDB. Okay, so that can be different servers. Okay. Any question, guys, or should I proceed? Sir? Yes. So server only needs to have that particular software which will be running on the local local computers. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब लोकल पे आपका कोई सर्वर थोड़ी चल रहा है. लोकल पे तो सिर्फ आपके वो टूल्स हैं जो आपको कोडिंग करने के लिए अलाउ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक्लिप्स में आप जावा की कोडिंग कर सकते हो, लेकिन वो प्रोग्राम तो आपको सर्वर पे ही चलाना पड़ेगा ना. मतलब यू डोंट नो डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर. यस सर. नहीं, यस का मतलब समझ नहीं आया. यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर और नो? हाँ सर, पता है. हाँ, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग अपने लोकल मशीन पे करते हो. मान लो वो एक क्लाइंट मशीन है, लेकिन जब प्रोग्राम आप चलाओगे एक्चुअल में, वो तो सर्वर पे ही चलाओगे ना. लोकल पे तो आप सिर्फ ये चेक करोगे कि वो सही चल रहा है, लेकिन लोकल पे आपके पास ना तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना उतना डेटा होगा जो कि सर्वर पे होगा.
राइट? Yes, sir. और सर्वर पे तो एक्चुअल डेटा होगा ना निष्ठा। लोकल पे आपको कभी क्लाइंट डेटा मिलेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। मान लो आप किसी बैंकिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप कोडिंग जो लोकल पे करोगे वो उसको टेस्ट ऑफ डमी डेटा के साथ करोगे ना। आपको कोई एक्चुअल क्रेडिट कार्ड्स या अकाउंट डिटेल्स थोड़ी मिल जाएंगी लोकल पे, वो तो सर्वर पे पड़ी होंगी ना। तो जब आप उस प्रोग्राम को लोकल पे टेस्ट कर लोगे, तब आप उसको सर्वर पे रन करोगे, तो सर्वर पे वो एक्चुअल डेटा पे चलेगा। लोकल पे हो सकता है आपने 100 डमी रिकॉर्ड्स के लिए चलाया, सर्वर पे वो मिलियंस ऑफ एक्चुअल रिकॉर्ड्स के लिए चलेगा। सर दैट्स राइट? व्हाट आई वाज आस्किंग कि हाँ, सर्वर में जैसे वी एक्सेस द मतलब हम थोड़ा थोड़ा डेटा करके हम लोकल अकाउंट्स वो लोकल पीसीज में हम एक्सेस करते हैं, उस पे फिर हम एनालिसिस या फिर जो भी कर सकते हैं। सो सर्वर नीड्स टू ओनली स्टोर द डेटा, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो बाकी हम काम हम लोकल पीसी से कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू हैव एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर? नहीं नहीं, व्हाई डू वी नीड, योर क्वेश्चन शुड बी, मतलब व्हाई डू वी नीड द सर्वर, और यू आर सेइंग व्हाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर। आई एम नॉट गेटिंग इट। आप हाँ, कह रहे हो व्हाई कि डू मुझे वी सर्वर नीड की जरूरत है? हाँ बोलो। हाँ, व्हाई डू वी नीड अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर? सर जब हम जो फंक्शनैलिटीज है वो हम लोकल पीसी पे कर सकते हैं बाय एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर। सो सर्वर का काम कैन बी रिड्यूस्ड टू ओनली स्टोरिंग एंड लेटिंग द लोकल कंपोनेंट्स एक्सेस द डेटा नहीं ना, दैट इट इज। नहीं 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 नहीं, आप कभी भी लोकल लैपटॉप से सर्वर का डेटा एक्सेस कर ही नहीं सकते। फिर वो तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया ना निष्ठा। आप समझो, सर्वर ओके। किस लिए होते हैं, सर्वर क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे आपके क्लाइंट का एक्चुअल डेटा होता है, सेफ डेटा, सिक्योर डेटा। तो आप वो डेटा कभी भी सर्वर से बाहर निकाल ही नहीं सकते। यस विपुल, राइट। सर्वर का पर्पस ही ये है कि वहां सारा डेटा वहीं पड़ा है आपका, वहां से आप कोई डेटा बाहर निकाल ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ फायरवॉल्स एंड लॉट ऑफ सिक्योरिटी। करोड़ों रुपया कंपनी खर्च करती है सर्वर की सिक्योरिटी के लिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ निष्ठा, कि लोकल लैपटॉप पे जो आप प्रोग्राम बनाते हो उसे आप डमी डेटा पे टेस्ट करते हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने 100 एक्चुअल रिकॉर्ड सर्वर से निकाल लिए लोकल पे और उन पे टेस्टिंग कर ली। ऐसा कभी नहीं होता। आपको लोकल लैपटॉप पे कभी भी एक्चुअल डेटा मिलता ही नहीं है, चाहे वो एक ही रिकॉर्ड क्यों ना हो। यू आर नॉट अलाउड, कंपनीज कैन बी स्यूड फॉर दैट। ओके? उस एक छोटी सी गलती के लिए कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। अगर आपने गलती से भी सर्वर का एक भी रिकॉर्ड अपने लोकल लैपटॉप पे उठा लिया, आपकी छोटी सी गलती कंपनी को बैंकरप्ट कर सकती है। अंडरस्टैंड दिस। नेवर टेक द डेटा फ्रॉम द सर्वर टू योर लोकल, नेवर। अगर कोई बोलता भी है ना कि ले लो, उससे बोलो मुझे रिटर्न में दो। कभी किसी पे विश्वास मत करना कंपनी में इन चीजों को लेके। आई एम टेलिंग यू एज अ फ्रैंक एडवाइस, take these things in return. These things can take your career for a toss. Okay? तो अभी क्लियर है निष्ठा, या अभी भी कोई डाउट है? हाँ सर, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आईडी कंपनी में कैसे होता है। सो हाँ दैट्स व्हाट हाँ, नहीं वो रियल वर्ल्ड में काम करके ही पता लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मान लो आपने एक पाइथन का मशीन लर्निंग प्रोग्राम लिखा जो ये बताता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं वो फ्रॉड है या नहीं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है? तो आप लोकल पे उसको कुछ डमी डेटा से टेस्ट करोगे, ठीक है? लेकिन आप अपना वो पाइथन का प्रोग्राम सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे, और फिर वो मतलब सर्वर पे डिप्लॉय करने का एक्सेस भी तुम्हें नहीं होगा। एक दूसरी टीम होगी जिसको हम डेवऑप्स कहते हैं। आप अपना जो प्रोग्राम है वो डेवऑप्स टीम को दे दोगे, और डेवऑप्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कोड को सर्वर पे डिप्लॉय करना। आपको तो उसका भी एक्सेस नहीं होता, आपको सर्वर का कोई एक्सेस ही नहीं होता। आप डेवऑप्स टीम को बोलोगे मेरा ये प्रोग्राम है जो टेस्टेड है, मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दो। वो सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर देंगे और वो सर्वर पे चलता रहेगा। और जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके कस्टमर्स कर रहे हैं, मान लो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन्स, वो सर्वर पे आएंगी, आपके प्रोग्राम से होती हुई जाएंगी और बताएंगी कि ये फ्रॉड है या नॉन फ्रॉड है, फ्रॉड नॉन फ्रॉड है, फॉर एग्जाम्पल। एवरीथिंग विल रन ऑन द सर्वर।
सर तो विदाउट हैविंग द डेटा एंड हम कैसे लाइक विदाउट द डेटा हम मॉडल कैसे बनाएंगे ना? हाउ विल वी चेक वेदर अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज ऑल राइट और नॉट? वेरी गुड पॉइंट. यू आर सेइंग कि भाई आप बोल रहे हो डेटा सर्वर पे है और लोकल पे मुझे मॉडल तो लोकल पे ट्रेन और मतलब बनाना है, राइट? या हाँ, वेरी गुड. तो होता क्या है निष्ठा कि लोकल पे आप जब कोडिंग करते हो, आप उसे कुछ डमी डेटा या मास्क डेटा के साथ करते हो. इसका मतलब होता है कि मान लो मैंने आपको अपने 10 क्रेडिट कार्ड कस्टमर का डेटा देना है, तो मैं आपको डेटा तो दे दूंगा, लेकिन उसमें मैं क्रेडिट कार्ड नंबर उड़ा दूंगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का नंबर इज नॉट अ फीचर फॉर एनी मॉडल. ऑल ऑफ यू अग्री? क्रेडिट कार्ड नंबर is not a feature, but it's a personal information for a customer which you should not share. Instead, I will share you values like 1 2 3 4 5 6 7, where I know ki 1 is for this credit card, 2 is for this credit card, but I will not share that to you. For you, I will say, okay, this is ID1, ID2, ID3, ID4. I will not give you customer credit card number. Okay, so you run your model like that. Definitely, I'll do encoded columns. We have seen such data in Black Friday sales case. Yeah, definitely, people. You have mask data, hidden data, जिसको हम कहते हैं, right? Encoded columns. तो इस तरह से हम आपको डेटा देते हैं, ठीक है. लेकिन अब इससे बात भी निष्ठा ऐसा नहीं है कि आपने लोकल अपने मशीन पे जो मॉडल चलाया वो सीधा प्रोडक्शन में डाल देते हैं. हम आपको एक दूसरा सर्वर देते हैं जो होते हैं आपके डेवलपमेंट सर्वर्स. जब आप लोकल पे कोड बना लेते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट सर्वर्स पे चलाते हैं और वहां पर एक्चुअल डेटा पे ट्रेन करते हैं उसको, ट्रेन टेस्ट एक्यूरेसी निकालने के लिए. और फिर वहां पर जो डेवलपमेंट सर्वर पे मुझे जो ट्रेन टेस्ट एक्यूरेसी आती है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो ही डेवलपमेंट सर्वर से हम प्रोडक्शन सर्वर में कोड को मूव करते हैं. तो पहले एक दूसरा सर्वर होता है जिसको हम डेवलपमेंट सर्वर कहते हैं, और अगर वहां सब कुछ सही चल रहा है तो ही हम प्रोडक्शन सर्वर पे कोड डालते हैं. तो अल्टीमेटली आप पहले अपने लोकल पे कोडिंग करते हो with some very basic data, few data sets, but that code then runs on a development server, because development server is also a server where you have the production data, copy of the production data. So here you run your actual models, and once you are satisfied with the development server output, then you share it to the DevOps, and DevOps move it to the production server, because production server is where you are getting actual data. Every second आपके कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है. लेकिन डेवलपमेंट सर्वर पे हो सकता है कि आपने एक महीने पुराना जो स्नैपशॉट था प्रोडक्शन का, वो वाला डेटा यहाँ ले लिया, कि एक महीने पहले तक जितना भी डेटा था सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे, वो यहाँ ले लिया. लेकिन लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स are not on development server, they are happening on the production server. So you don't have the latest data on the development server, but at least a copy of that, which is 1 month old or maybe 1 week old. समझ रहे हो निष्ठा? Any further question? सर ये जो डेवलपमेंट सर्वर्स होते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, AWS, Azure, जो और अदर कंपनी सर्वर्स. वेरी गुड पॉइंट. यस नितिका, मैं आप शायद लेट ज्वाइन किए, मैं यही बता रहा हूँ कि दी सर्वर्स कैन बी AWS, GCP, Azure, they can be even the personal servers, वो जो ऑन प्रीमाइस होते हैं, राइट? आपके सर्वर्स आप ही की कंपनी में रखे हैं सिक्योरिटी एरिया में, क्लाउड पे नहीं है. सर कोई भी सर्वर हो, AWS वगैरह, तो सब हम पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हैं. Yes, you have to do remote login. Putty is the best tool for that. There are few other tools like Putty, but 99% of the people in the industry use Putty. तो सर अकाउंट नहीं होता, like the way you showed us, like in AWS you had account. Correct. And you just logged in. Correct. तो सर उसमें पुट्टी का भी यूज है? देखो ना, अभी ये कह रहे हो ना आप
Yes, ये sir. AWS, अरे तो AWS पे जब मैं लॉगिन करा तो यहाँ तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है ना नितिका कि मेरा क्लस्टर इस समय चल रहा है या नहीं, ठीक है, क्लस्टर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्लस्टर की मॉनिटरिंग कि देखो क्लस्टर में इस समय कुछ काम चल रहा है। यहाँ तो सिर्फ मैं ये देख सकता हूँ मेरे क्लस्टर की हेल्थ क्या है, मेरा Okay. क्लस्टर रनिंग। यहाँ पे मैं कोडिंग थोड़ी कर सकता हूँ, कोडिंग तो मुझे पुट्टी पे ही करनी पड़ेगी ना, मतलब पुट्टी के थ्रू ही करनी पड़ेगी। यहाँ से नितिका, आई एम नॉट लॉगिंग इनटू द सर्वर, मैं यहाँ से सर्वर के बारे में देख रहा हूँ कि सर्वर चल रहा है या नहीं, सर्वर के अंदर नहीं हूं मैं, सर्वर के अंदर घुसना है मुझे तो पुट्टी से ही तो घुसूंगा ना उसके अंदर। ये पुट्टी अलाउज मी टू गो इनसाइड द सर्वर। इट्स लाइक आई एम हैकिंग योर लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बैठा बैठा मैं आपके लैपटॉप के अंदर घुस गया और ये आपका लैपटॉप है और मैं आपके लैपटॉप पे कुछ भी कर सकता हूँ कमांड रन कर करके, जो हैकर जैसे काम करते हैं। Like remote control. ये मैंने रिमोट कंट्रोल ले लिया, मैंने एक तरह से रिमोट कंट्रोल ले लिया ये सर्वर का। ये मैं इस समय सर्वर पे हूँ ना, ये आप देख रहे हो ये सर्वर पे हूँ मैं। ये देखो इसकी इसकी मैं कमांड चलाता हूँ, होस्ट नेम, ये सर्वर का होस्ट नेम है, ये मतलब आईपी एड्रेस है मेरे हडूप सर्वर का। गेटिंग इट? Yes, sir. मैंने एक तरह से कंट्रोल ले लिया है पूरा सर्वर का। अब मैं यहाँ पे शट डाउन कमांड भी चला सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं चलानी है, मैं शट डाउन कर सकता हूँ सर्वर को यहाँ बैठा बैठा, क्योंकि मेरे पास पूरा कंट्रोल आ चुका है सर्वर का। यहाँ सर्वर पे मैं देख सकता हूँ, इसमें सर्वर पे है तो मैं सर्वर पे पाइथन की कोडिंग भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना आप? ये मैं सर्वर पे हूँ इस समय, ये पाइथन वाइथन सब जो चल रहा है सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। ये जावा भी वहां पर है तो जावा की कमांड्स भी चल सकते हैं वहाँ, देख रहे हो ये जावा जावा की कमांड चल रही है, मैं जावा, तो सर्वर पे जावा भी है, सर्वर पे आर भी है, सी I have R, Java, Python, everything on the server. But on my local Windows laptop, I don't have R. I don't have Python. I only have Java. I only have Java anything on my local laptop. I don't have Python. I don't have R. But on the server, I have everything. I can uninstall this R from the server. I can corrupt this server because currently I am inside the server. With the help of guys, किसकी मदद से मैं सर्वर के अंदर घुसा हूं? वेरी गुड अदिति, यस विपुल, करेक्ट, पुट्टी, पुट्टी की मदद से, पुट्टी की मदद से मैं सर्वर में घुसा हूं। और सर्वर है मेरा निष्ठा, सर्वर इज क्लाउड सर्वर, मैं सर्वर में घुसा हूं पुट्टी की मदद से, लेकिन सर्वर जो मेरा है वो क्लाउड पे चल रहा है। Oh, sir, yes, can you reshare the commands? I haven't seen. one second. Yes, Vipul, we can see some basic graphs, but not complex. मतलब a few graphs can be done using R and Python. That will open a separate window, a pop-up window. Okay, graphs can also be seen, but that graphs will not be very complex graphs, simple graphs. ओके हाँ निष्ठा, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। निष्ठा, नितिका, someone was asking, right? हाँ वो मैंने देखा है, कुछ कोई मुझसे कुछ कमांड्स मांग रहा था, आई डोंट नो व्हाट कमांड्स एंड हु वाज आस्किंग। Yes, I was asking for the commands. व्हिच कमांड नितिका? Sir, to log in into other server, putty commands, or either putty is there only. नहीं, there is no command नितिका, see this is putty, okay, you open the putty, you put the IP address of that server here, okay, here. Okay. For example, this is the IP address or the host name, put it here and click on open. It will open, it will ask you for the username password for that server. You give the username
for that server, and you will be inside that server. So I'm inside EMR. EMR is Elastic Map Reduce. I told you, right? It's Elastic Map Reduce, which is the Amazon's own Hadoop. जैसे क्लाउडेरा हडूप है, हॉटनवर्क्स हडूप है, वैसे ही Amazon का जो हडूप है उसको वो कहते हैं EMR, Elastic Map Reduce. Correct? Yes, sir. So and the machines on which these Hadoops are running, they are known as EC2 machines. EC2, Elastic Cloud Compute. Elastic Cloud Compute, EC2. You see here, EMR is running on EC2. EC2 are just the machines. Hadoop, not Hadoop. They are the simple machines which Amazon provide. On EC2 machines, I can install Linux, Windows, anything. But because I'm running EMR on EC2, so these machines will have Linux running on them. Right? Yes, sir. Anyone, any question? Sir? Okay, yes. Sir, you said that on this putty we can use Python and whatsoever. So, Yes. what? तो फिर सर हम जुपिटर पे क्यों प्रैक्टिस करते हैं? देखो, पहली बात तो पुट्टी के ऊपर मैं कुछ नहीं कर रहा. पुट्टी कैन नॉट, पुट्टी को मैं पुट्टी पे पाइथन कुछ नहीं कर सकता. मैं बार बार वही बोल रहा हूँ. पुट्टी इज जस्ट एंड जस्ट टू लॉग इन टू द रिमोट मशीन. Okay, so sir, if we need to work on Python, we can open Jupyter and then connect it to putty and. No, you are not getting it. I am saying putty is just a way to log into the server. Okay. Once you are inside the server, you can do whatever you want. You can do Python. You can access even Jupyter notebooks from here. You can access the R. You can access everything from here. But first you need to be inside the server. Yeah, so sir, that's what I'm saying. कि अगर हमें server से connect करके we need to work on Python, तो we have to open Jupyter notebooks through putty only. Not through putty. Through this console. Please be very clear. Yeah. Don't say putty. पुट्टी का काम खत्म हो जाता है जैसे वो आपको इस ब्लैक एंड व्हाइट विंडो पे लॉगिन करा देता है. उसके बाद यू शुड नॉट से पुट्टी. इट इज द सर्वर. यू आर इनसाइड द सर्वर. ओके. जैसे आप अपने वीएम पे वो टर्मिनल खोलते हो ब्लैक वाला, ये एक तरह से वही खुला हुआ है. तो पुट्टी का तो रोल खत्म हो चुका है ना. ओके. Yeah, what Karan is saying, it's just a medium to log in to your server. That's it. Okay. So we have invested enough time. Now let's move ahead. But what I'm saying, Nishtha, is अगर आपको Jupyter notebook भी खोलना है, तो you will have command from here like Jupyter notebook, and मतलब you will enter that. It will open that for you. Okay. Provided the Jupyter is installed on that machine. If it is not installed, there are other ways of doing it. Okay. So sir, through yes. So sir, through putty, it will be connected to the server, our Jupyter notebook. Yeah, you are connected to server and now अगर सर्वर में Jupyter notebook installed है तो आपको सर्वर से एक्सेस करना है. वो पुट्टी का उसमें कोई रोल नहीं है. अब अच्छा. जैसे आपने पाइथन लिखा, आप पाइथन के अंदर आ गए. पुट्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सर्वर पे क्या है क्या नहीं है. पुट्टी का काम ये था कि आपने बोला मुझे एक सर्वर से कनेक्ट करके दे दो, उसने आपको सर्वर से कनेक्ट करके दे दिया. वहां उसका काम खत्म हो जाता है. अब कल को मान लो तुम्हें जूलिया की कोडिंग करनी थी, लेकिन जूलिया वहां पर है ही नहीं उस सर्वर पे, तो यू कैन नॉट से कि ये पुट्टी की गलती है. पुट्टी ने तो आपको सर्वर पे कनेक्ट कर दिया. सर्वर पे जूलिया इंस्टॉल्ड नहीं है, वो क्या करे. वहां पाइथन इंस्टॉल्ड है, पाइथन पे काम कर लो. अब वहां जुपिटर भी इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो आप जुपिटर नोटबुक लिखते और वो चल जाता. ठीक है. ओके. बट देर आर Zeppelin guys.
यू हैव जैपलिन हेयर, तो हम मतलब जैपलिन की नोटबुक्स एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। उसका मेरे पास अलग से यूआरएल है, ठीक है। मतलब इस सर्वर पे क्या क्या चीजें एक्सेस की जा सकती हैं उनकी डिटेल्स है मेरे पास। जैसे मैंने ये खोला हुआ है, ठीक है, ये मतलब स्पार्क का कंसोल है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये सारे जैसे यार्न का रिसोर्स मैनेजर खोलते हो वैसे ही ये स्पार्क का एक तरह से रिसोर्स मैनेजर टाइप है कि कौन कौन सी जॉब्स चली हैं, कब कब चली हैं। we will we will see all these things in a while. Okay. Okay. So we will access all these user interfaces, but see on cluster, these are running on the cluster, on cluster application user interfaces. तो मतलब इस क्लस्टर पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस चल रही हैं जो ब्राउजर से ही एक्सेस की जा सकती हैं। समझो, देखो पाइथन को तो आप यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट विंडो से एक्सेस कर लोगे, कोडिंग भी कर लोगे, स्पार्क, पाई स्पार्क सब कुछ। लेकिन अब जुपिटर नोटबुक एक्सेस करनी है जैसे निष्ठा कह रही है, या मुझे जेपलिन की नोटबुक एक्सेस करनी है, तो वो मैं यहाँ से एक्सेस तो नहीं कर सकता ना, वो चलेंगी तो किसी ब्राउजर में ही चलेंगी ना, तो मुझे वो ब्राउजर में ओपन करनी पड़ेंगी। तो उनके जो यूआरएल्स हैं वो यूआरएल्स यहाँ पर हैं। यहाँ मेरे पास वो सारे यूआरएल्स हैं जो कि चल इस मशीन पे ही रहे हैं, बट उनको एक्सेस करने के लिए मुझे एक इंटरनेट ब्राउजर चाहिए। तो आई कैन यूज दिस लिंक एंड ओपन इट इन द इंटरनेट ब्राउजर। ओके, for example, I have yarn server, Tez server, I have so many servers that I can access. See, I'm clicking on yarn server. See guys, ये मेरा हडूप सर्वर है, लेकिन यार्न तो हमने ब्राउजर से ही एक्सेस किया था ना, चाहे वो वर्चुअल मशीन में किया हो। तो उसके लिए मुझे जो यूआरएल्स हैं वो यहाँ पे हैं मेरे पास, मुझे बस यहाँ से उनको ब्राउजर में खोलना है। और ये देखो खुल गया, और ये तो आप सबने भी देखा ही है अपने वर्चुअल मशीन में, बट यू नीड अ ब्राउजर टू ओपन दैट, यू कैन नॉट ओपन दैट इन अ ब्लैक एंड व्हाइट विंडो। तो ये मैं निष्ठा आपको बता रहा था कि अगर निष्ठा आपको जुपिटर खोलना है तो जुपिटर ओपन्स इन अ ब्राउजर ओनली। तो आई विल जस्ट चेक फॉर द जुपिटर यूआरएल, राइट? आई विल जस्ट गो टू द अकाउंट हेयर एंड आई विल सर्च कि भाई जुपिटर अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका लिंक मुझे बता दो। यहाँ जुपिटर इंस्टॉल्ड नहीं है, रादर क्या इंस्टॉल्ड है निष्ठा यहाँ पे? Zeppelin. And I told you yesterday, Zeppelin is a something which is advanced form of notebook, Jupyter notebook. So this is the URL which I can open in the browser to access the Jupyter and do my Python coding. समझ आ रही है चीजें निष्ठा? मतलब दिमाग में बैठ रहा है ये फ्लो? तो सर उस केस में पुट्टी की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, पुट्टी नहीं चाहिए इन चीजों के लिए, आपको पुट्टी नहीं चाहिए, because these are browser URLs. You need your local browser to access them. Yes. Okay. Yeah. So here we will open this link like Zeppelin. So where we will open this link. हाँ, तो say for example I'll copy this and I'll open here in the browser. I'll just paste it and open it. That's it. I'll In our copy paste local here machine. in your local machine. Yes, because यहाँ तो आप ब्राउजर एक्सेस ही नहीं कर सकते ना लिनक्स पे तो। Yes sir. But sir डेटा फिर हमारे लोकल पे नहीं आ जाएगा? नहीं निष्ठा, ऐसा नहीं है। आप जो भी डेटा एक्सेस करेंगे, ये अभी ये लिंक चल नहीं रहा है अभी, आप जो भी डेटा एक्सेस करेंगे वो सारा डेटा वो होगा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ls करके ये जो आ रहा है, ये जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स जब आप यहाँ पर pd.read csv करोगे
तो आप वही CSVs रीड कर सकते हो जो यहाँ पड़ी हैं, मतलब EMP फाइल और ये. यू कैन नॉट रीड योर लोकल फाइल्स, वो एरर मार देगा, वो रीड ही Okay. नहीं करेगा. मतलब दिस ब्राउजर, for example, if you have a Jupyter cell here where you say import pandas as PD and pd.read CSV and you say file EMP, it will point to this file. But if you try to read a file from your local, it will throw you error, because in all the cases it will read files from here. So which are in turn connected to the server. Yes, ultimately this browser link, this URL is running on your local browser, but it is pointing to server only. So any, से आपने यहाँ लिखा import pandas, but pandas package यहाँ पर अभी installed ही नहीं है, तो it will fail. First you need to do the pip install here, then only you can access it here in Jupyter Notebook, because ये इंटरफेस आपको दिख रहा है आपके लोकल पे, बट पीछे सब कुछ चल कहाँ रहा है, सर्वर पे. ओके ओके, thank you. Give me guys 2 minutes, then I'll continue.
So we have discussed so far pretty much about this. So now, okay. So we need to proceed on to the actual hands-on. It's been too much already. अच्छा, ये तेज का लिंक होता है. अगर आप में से किसी ने तेज के बारे में मैंने बताया था, राइट? तो तेज भी ऐसा दिखता है. I'm not going into that right now. Like you run Hive using Tez. Okay. Now, okay. Now we are on the server, which is running somewhere in America or I don't know where. I can check where this server is currently running. It's running in North Virginia. Okay. So this machine which I'm accessing, it's actually physically present in North Virginia. Okay. So this is the current time on this machine. सुबह के 5 बज रहे हैं यहाँ पे अमेरिका में, या जो भी नॉर्थ वर्जीनिया वेयर एवर. December 31st, 5 a.m. in the UTC time zone. Okay. So now what we were doing was, हमने यहाँ पे Spark Shell access कर लिया, हमने यहाँ PySpark access कर लिया. Now the another thing is Spark R. See, I am saying Spark R and enter. So I'm inside Spark R also. So here I can run my R machine learning models, R based machine learning models on Spark. Okay. So I'm inside Spark R shell, and the version of the R is R 3.4.3 kite eating tree. That's the version. So I'm again exiting from here. Just wanted to tell you that for each one of these we have separate shells. Okay. Okay. So guys, we have seen that, okay, we have Spark shell, PySpark shell, Spark R shell. Now the another one is Spark-SQL. So if you type Spark SQL and enter, so Spark SQL ने Hive को replace कर दिया है. So what we are doing here is, we are going inside the Spark SQL. So this is the Spark SQL console. Now let's do all the Hive coding. Here, show tables. It will show you the tables. इसका output कैसा दिखता है? There is a default database. This is the table, and false and true मतलब whether it's temporary or permanent table. So these are all my tables which are already present. I can create a new table, create table, say orders with order ID as integer, quantity as integer, for example. So if you see, I am able to create a table here also. Okay, create table. I'm able to create a table using Spark SQL. Okay, using Spark SQL, I'm able to create a table. विपुल, मैंने बनाया था ये टेबल आज सुबह. ओके, इसलिए वो आपको यहाँ दिख रहा है. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक भी टेबल नहीं होता. यू आर राइट, मैंने बनाया ये सारे टेबल सुबह. ओके, तो ऑर्डर्स टेबल भी मैंने यहाँ बना दिया. तो अल्टीमेटली बात ये हुई कि स्पार्क SQL is very faster. Let's see. I have to select count of star from orders.
So now when I'm saying select count star from the orders, it's running this SQL on Spark, guys. So it will run Spark job. It will not run MapReduce. And it will be very, very fast. So it's running tasks. I told you here we don't have map task, reduce task, everything is task. It's working with RDDs. There are RDDs, data frames. We saw this map partition RDD yesterday. So it's running a particular job right now. Let's see. You can see that Spark SQL in the Yarn console. In the Yarn console, I can see that that job is running, Spark job. Let's click on this. That job is actually completed, I think. That's why it's not showing anything. Let's go back. So it's using Yarn scheduler, running this job. So on Yarn, I'm not able to see the full logs. So I have the Spark link also. It's taking some time. So what I'm saying is, this is the fourth place where we logged in. Spark Shell, PySpark, SparkR, and now this is Spark SQL. So Spark SQL has replaced Hive. So you don't need to do Hive now. You can run here. So this SQL is running on Spark. It will be very, very fast. Initial job. The problem why this is happening, guys, is it's not कि मेरी जॉब स्लो है, ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्लस्टर में उसको कुछ रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं. See, it's not getting the sufficient resources to run this particular job. This might be because some other processes might be running on my machine. Let me check. ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है. So let me do one thing. I think there are some jobs which are running. I'm exiting this. I'm running the PS. Okay. So guys, if you see, मैंने already बहुत सारे Spark sessions चला रखे हैं. Let's see this. ये एक R का सेशन चल रहा है. Let me kill this. So it's killing that session. I'm killing that. Data nodes पे जो भी jobs चल रहे हैं, they are getting killed. PS. Okay, there is this also which is running. So I need to make sure that unnecessary jobs ना चल रही हो मेरी server पे.
I can kill a job by just saying, okay, kill -s 9. 9 is a special word, and then the job ID. Okay. Now let me see what's happening here. Actually, this is Spark R, if you see, is running, right? So I need to just kill this. Okay, it's done. It's finished successfully. Now this Spark SQL, I can check like what's happening with this. Is it still running? Okay. So I'm again going inside the Spark SQL. आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपकी मशीन पे सिर्फ स्पार्क शेल और पाइस्पार्क ही चलेगा, स्पार्क आर नहीं चलेगा और स्पार्क सीक्वल भी नहीं चलेगा. Okay, so I am saying show tables. So again, it's running show tables. Let me describe formatted the orders table. So when I'm describing the orders table, it's saying it's a managed internal table. Its location HDFS में, यूजर में, हाइव में, वेयरहाउस फोल्डर के अंदर ही है, ये वाला पाथ. ओके. सर्डे क्या है? लेजी सिंपल सर्डे, राइट? पीछे वो सीक्वल भी चल रही है. आई कैन सी दैट जो एसक्यूएल हमने पहले चलाई थी वो पीछे चल रही है. इट माइट कम हियर इन अ फ्यू सेकेंड्स. Because see, it's saying it started some executors and then it's killing those executors. So जो पुरानी सीक्वल जो हमारी हैंग हो गई थी बीच में, वो अब चल गई है. इट्स रनिंग बिहाइंड. इट्स सेइंग कि ड्राइवर ने सारे एग्जीक्यूटर से काम करवा लिया है, अब वो उनको किल कर रहा है एक एक करके. जब ये सारा काम हो जाएगा हमें आउटपुट दिख जाएगा. मतलब if you see here, executors are getting added and after some time they got removed. They got removed also. तो ये हम यहाँ पर देखेंगे पूरा. इसको हम इवेंट टाइमलाइन कहते हैं कि हमारा जॉब को चलने में कितने एग्जीक्यूटर्स यूज हुए और कब कब कौन सा एग्जीक्यूटर एट व्हाट टाइम विच एग्जीक्यूटर वाज एडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर स्टार्ट्स एंड देन ड्राइवर स्टार्ट्स द एग्जीक्यूटर्स, राइट? आई होप यू ऑल रिमेंबर जो मैंने कल आपको आर्किटेक्चर दिखाया था. The architecture that we saw yesterday, Spark. The architecture that I explained you yesterday was this one. That whenever you run a program on Spark, there is a master node where the driver starts. Driver talks to the Yarn cluster manager and runs the jobs on the data nodes in the form of executors. So it starts the executors, right?
ड्राइवर प्रोग्राम यूजेस स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इन स्पार्क 1.0 और 2.0 में क्या हो जाता है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट की जगह स्पार्क सेशन. तो अल्टीमेटली ड्राइवर फर्स्ट स्टार्ट्स and then it starts executors. So that's what I am showing you here. Driver first starts and then the executors starts. And once executors are done with their work, driver will be killing the executors. Executor number 20 killed by the driver. So that will happen, right? That is the driver only, Gulzar. So say I'm again running that query like select count star from EMP. Guys, I have again ran that select count of star from EMP. Select number of records in the EMP table. So it completed and gave me output as 0. पहले वो क्यों हैंग हो गया था आपको समझ आ रहा है ना, मैं कुछ प्रोसेसेस चल रही थी जो मुझे किल करनी थी, अभी उसने इतनी जल्दी आउटपुट दे दिया. बट लेट मी रन ऑर्डर्स वाले के लिए फिर से. सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, देखो विद इन सेकेंड आई गॉट द रिजल्ट. वो पहले उसको रिसोर्स नहीं मिल रहे थे इसलिए इतना टाइम लग रहा था. सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल. अब ये सेम क्वेरी गाइस मैं हाइव में चलाऊंगा एंड लेट्स सी कि उसको कितना टाइम लगता है. यहां पर लगा 0.13 seconds, only 0.13 seconds in Spark. Now I am coming out of Spark. I am going inside Hive. Same table can be accessed in Hive and Spark both. Okay. Like I'll do show tables. All those tables जो यहाँ बनाओगे वहां एक्सेस होंगी, वहां बनाओगे यहाँ एक्सेस होंगी, सब कुछ है. तो अब यहाँ पर हम चलाते हैं सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. नहीं, उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा हाई का एग्जीक्यूशन इंजन क्या है. रिमेंबर आई टोल्ड यू हाई का एग्जीक्यूशन इंजन मैप रिड्यूस ही होना चाहिए, तेज है. मुझे उसको पहले मैप रिड्यूस करना है. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाई में मैप रिड्यूस जब चलेगा तो वो कितना टाइम लेगा. So I'm running that same query. It's starting the MapReduce job. Now MapReduce job actually failed here. Okay, it failed. Okay, I don't know why it failed, but I'll check why it failed. Whatever, I'll check why it failed, but let me run another query. Let me do it from EMP table. नहीं, ये तो खैर अलग चीज है. लेट मी चेक कि ये फेल क्यों हो गया. ओके, ये मेरे पास ट्रैकिंग यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करता हूं. अब इसको कहाँ ओपन करूंगा, अपने लोकल ब्राउजर में, राइट. लोकल ब्राउजर में ओपन करूंगा. ये नहीं खुल रहा, 1 सेकेंड. इट्स शोइंग तेज, बट मैंने तो तेज चलाया ही नहीं, मैंने तो मैप रिड्यूस चलाया है. गेटिंग इट, ये क्यों हो रहा है, एक मिनट. मैंने तो तेज चलाया ही नहीं, मैंने तो मैप रिड्यूस चलाया है. 1 सेकेंड. सब कुछ
I'm running it again. Why it's failing? Okay, whatever. It is taking some time, but what I want to tell you guys is कि हाई में अगर मैं वही सेम क्वेरी चलाऊंगा तो इट विल टेक टाइम, टू मच टाइम एज कंपेयर टू स्पार्क. बट मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि हाइव में मेरा एग्जीक्यूशन इंजन, हाइव में मेरा जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो मैप रिड्यूस हो. ओके, ये अलग बात है कि मैप रिड्यूस अभी डेप्रिकेट हो रहा है हाइव में भी, और वो कहते हैं कि आप हाइव में स्पार्क या तेज यूज करो. तेज इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू मैप रिड्यूस. स्पार्क इज फास्टेस्ट. ओके, सो द पॉइंट इज स्पार्क, you saw Spark SQL was very fast. Initially it hanged because some other services were running जिनको मैंने kill किया था. So I'm coming out of Hive. Okay, so what I have shown you so far is कि Hive में query चलाओगे it will take time comparatively. The only difference is कि वो fail हो रहा है because of some reasons. But when I went inside Spark, we saw कि Spark में SQL is comparatively very fast. So any question before I proceed ahead? MapReduce is deprecated Nishtha, but it can still be used. Is it used to begin to execute queries? Yes, Gulzar, the driver is what starts the execution of the program. Okay, so guys, you one second, you can go inside the Spark SQL and you can do that kind of Hive वाला सारा काम यहाँ कर सकते हो आप. हाँ बोलो, मिस्टर. सर yesterday you were saying कि Spark में वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और Hive में मैप रिड्यूस होता है तो जावा कोड होता है, तो Hive में कम टाइम लगता है as compared to Spark. नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला. सर आपने एग्जांपल नहीं दिया था कि if job is taking 13 seconds in Hive तो Spark में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता but it will take 15. नहीं, मैंने क्या बोला था, देखो मैंने बोला था कि आपके पास स्पार्क है जो सीधा आप स्काला में कोडिंग कर रहे हो. स्पार्क विद स्काला इज फास्टर एज कंपेयर टू स्पार्क विद पाइथन. मैं हाइव से तो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकता ना, ये हाइव है. ओके, सीक्वल से कोई वो नहीं है. नहीं, मैं कह रहा हूँ हाइव में तो हमेशा मैप रिड्यूस चलेगा ही चलेगा, तो वो तो स्लो ही रहेगा ना हमेशा. यस सर. हाइव में तो मैप रिड्यूस चलेगा ना हमेशा, तो उसको तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता स्पार्क से, वो तो क्योंकि स्लो वो ही जावा कोड में कन्वर्ट होगा सीक्वल कमांड में. नहीं, जावा कन्वर्ट हो ना हो, बात है पीछे वो मैप रिड्यूस चलाएगा. ठीक है, पीछे वो मैप रिड्यूस चलाएगा. लेकिन मैं अब स्पार्क की जब बात कर रहा हूँ, स्पार्क में मैप रिड्यूस नहीं चलता. स्पार्क अपने आप में एक अलग तरह का प्रोसेसिंग है. तो अब स्पार्क में या तो आप स्काला से कोडिंग कर सकते हो या पाइथन से कोडिंग कर सकते हो. मैं कह रहा हूं कि स्काला से कोडिंग करोगे दैट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू पाइथन, बिकॉज पाइथन विल फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्काला ओनली with the help of Pi4j. I told you with the help of Pi4j. समझ रहे हो नितिका, आप मिक्स कर रहे हो दो चीजें. यस सर, कंफ्यूज हो गई. आई गॉट इट. मैं कह रहा हूँ कि स्पार्क में अगर आप स्काला की कोडिंग करते हो
So that will be faster when you run that program as compared to a program which is written in Python. Because Python will first convert it into Scala or you say Java using Py4j. Okay? So मैं Spark में ही दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपेयर कर रहा था. ओके नितिका? लेकिन अगर आप स्पार्क को चाहे स्काला से करो या पाइथन से, हाइव से वो हमेशा फास्टर ही होंगे, क्योंकि हाइव रन्स मैप रिड्यूस, जावा मैप रिड्यूस, इट रन्स जावा का मैप रिड्यूस, एंड मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स आर वेरी स्लो. ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन guys, any question? हाँ गुलजार बोलो. अरे कि ये पुट्टी और एक्लिप्स और क्लाउड रन में से कब कौन सा यूज करना होता है? गुलजार, you can discuss that with your classmates after the class. ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ. Okay, you discuss with any one of your classmates, they will help you. Okay. Okay sir. Okay. Yeah, Vipul. So, okay, to answer your question, running Hive jobs is cheaper than Spark SQL. No, that's not the case. It depends. देखो, cheap एक बड़ा ही relative word होता है. मतलब मान लो आप Hive का एक जॉब चला रहे हो जो 10 घंटे तक चल रहा है, और वही Spark में 1 घंटे में हो गया. तो what will you say? What is cheap? It depends on what is important to you. आपने 9 घंटे बचा लिए स्पार्क में. Let me type in that. You run something in Hive, the same query अभी जो हमने देखा, it took say 10 hours, but the same thing in Spark took say 1 hour. वो बहुत बड़ी बात है 1 hour भी, but let's say it took 1 hour. So what will you say? Here it used say 1 GB, but here it used say 10 GB RAM. But now the question is, how can you say what is cheap? First of all, that's a very relative word. Ideally, if you look at, you will say this is cheap because it took 1 GB RAM. But you have to see at the time also, right? The time that it took. So there is always a trade-off, like you have bias variance trade-off. So in the computer science, we have a trade-off between the time taken versus the memory consumed or the resources consumed, right, Vipul? So ideally speaking, Spark is cheaper. I'm not talking about money. I'm talking about what is the gain for your organization. For example, I have, अब इसको ऐसे देखो, मैंने एक डेटा एनालिस्ट हायर किया जिसको मैं महीने का 1 लाख रुपए दे रहा हूं. अब वो डेटा एनालिस्ट को आउटपुट 1 घंटे में मिल जाएगा, तो ही विल बी मोर प्रोडक्टिव कंपेयर टू कि वो 10 घंटे तक एक क्वेरी चला दी, उसका वेट कर रहा है और कल आकर उसका आउटपुट उसको मिल रहा है. यू आर लूजिंग टाइम एंड मनी, right? You are losing your resources, your engineer's time. So that's why people are in today's world, companies जो है वो इन्वेस्ट करने से नहीं डरती. वो 1 करोड़ का 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कर देंगी, provided they are getting the benefit out of it. उन्हें दिख रहा है कि इस चीज से बेनिफिट हो रहा है. तो companies have huge investment buckets for IT infrastructure. In today's world, they have a lot of money for that. Okay, but yeah, that was a good point.
Okay guys, so let's come back to this thing. You have seen, yes Gulzar, it depends on the type of job. The type of job, as in whether it's a data analyst, whether it's a data scientist, that kind of a job. Okay, and then you have to decide whether you want to use Hive or Spark. Each company may not have that much money that they can use a Spark. Okay, Spark is costly. Okay, so हमने Spark Shell देख लिया, PySpark देख लिया, Spark R and Spark SQL. Spark SQL में कुछ ऐसे करने को नहीं है, because ultimately सब कुछ है Hive ही. But it will be very, very fast because Spark SQL will run on Spark, not on MapReduce. So now we are done with everything. I'm coming out of it. Okay. Now what we have to do is we have to do PySpark. All the next sessions, hands-on will be only on PySpark. I have shown you all the interfaces, the different purposes. MLlib is a library Vipul. जैसा उसका नाम से ही पता लग रहा है. It's a machine learning library. It's like a package. So when you work on PySpark, then you will use MLlib. There is no separate interface to go inside MLlib. Got it, right? So now we will do PySpark. That's what it should be our focus only. And in company also you will work on PySpark. MLlib or even the graph data, the giraffe, no, not giraffe, graphics, all are libraries inside the PySpark. Okay, Vipul. So now guys, what we have to do, मान लो आप एक कंपनी में जाते हो, आपको बोला जाता है कि हमारी कंपनी में हडूप यूज किया जा रहा है. वेरी गुड. आपको बोला गया कि ये एक हाइव का टेबल है, इस पे क्वेरी रन कर दो. अब आप में से जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, वो हाइव खोलेंगे, हाइव में जाके वो क्वेरी रन करेंगे, और वो क्वेरी हो सकता है कि 2 दिन तक चलती रहे. बट जो थोड़े स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे, they will go inside what? Can anyone tell me? Instead of going inside running the query, where will they run that query? The same query, instead of running that in Hive, where should they run it? Guys, I need answers from more people. Yes, Vipul and Aditi, you are correct. They will run the same query in Spark. But it should be Spark SQL, right? So Vipul's answer is exactly the correct one. It's the Spark SQL. So they will go inside Spark SQL and they will run the same query and it will give result within say minutes. So that's the difference. Because तुम्हें बोला गया था कि हाइव, तुम्हें बोला कैसे जाएगा, ये हाइव का टेबल है, इसके ऊपर एक एग्रीगेट क्वेरी चला दो. अब दिमाग तुम्हें लगाना है कि तुम्हें ये किसी ने थोड़ी बोला है कि तुम्हें वो क्वेरी हाइव में चलानी है. हाइव में तो वो टेबल है, क्वेरी आप स्पार्क पे चला लो ना, because Spark SQL can access the Hive tables. Simple. And that is the difference between a good or a excellent engineer. Okay, पता सबको है, लेकिन कब क्या यूज करना है वो एक बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, आप किसी को बोलोगे अरे तुम्हें Spark SQL यूज करना चाहिए था, तो वो कहेगा ओके सॉरी गलती हो गई, बट वो गलती होनी नहीं चाहिए ना. तो you have to have that level of thought process. Okay, so now don't use Hive, use Spark SQL going forward. But the point is, किसी किसी कंपनी में Spark SQL होता ही नहीं है. जैसे आप लोगों के VM पे भी आप लोग Spark SQL में नहीं घुस पा रहे होंगे. करेक्ट, आप Spark SQL टाइप कर रहे होंगे, वो कुछ भी नहीं हो रहा होगा. गाइस कैन यू ट्राई एंड टेल मी? वेरी गुड, परफेक्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप Spark SQL एक्सेस नहीं कर सकते. नो, you can do that
from PySpark also. Okay. So in 50% of the companies, you don't have direct access to Spark SQL. You do Spark SQL through PySpark. I'll tell you how. That's what the next point is. पहले ये क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं. हाइव को अवॉइड करेंगे, स्पार्क सीक्वल पे काम करेंगे, लेकिन डायरेक्ट स्पार्क सीक्वल का एक्सेस अगर नहीं है तो इनडायरेक्टली उसको एक्सेस करेंगे हम पाईस्पार्क के थ्रू. तो नाउ वी आर स्टिल डूइंग स्पार्क सीक्वल बट फ्रॉम पाईस्पार्क. So what? So as a data scientist, I have done that, and even my friends are doing this. They are using PySpark to run the SQL. We don't have direct access to Spark SQL, and it's very easy. मैंने कल आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया था, निष्ठा ने उसको हैंड्स ऑन भी किया था. स्पार्क कंटेक्स्ट होगा आप सबके पास, मेरे पास स्पार्क सेशन है क्योंकि मेरा स्पार्क 2.0 है. So PySpark is the main source to access Spark SQL. Yes, Gulzar, absolutely correct. So guys, you have to just type spark.sql, and within this brackets you have to type the SQL query. Within the single quotes you will say select star from say orders. That's it. Query run हो गया, चल गया. नहीं करण, नहीं आप लोगों के लिए स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना होगा ना, वहां देखो ना, यहाँ लिखा होगा वहां स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल एज SC and SQL context is available as SQL context. है ना. तो आप लोगों को SQL context यूज करना है. 1.0 में दो अलग अलग context होते थे ना, Spark context and SQL context. तो whenever you have to use Hive, you have to use that SQL context. So write SQL context.sql, and then within that you can just say select start from EMP and run that, please. The only difference is आपको बस ये पार्ट एडिशनल लिखना पड़ गया. Guys, please try it. SQL context.sql and then write a select query or whatever. एक चीज और है, ये डॉट शो फंक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि उसी की वजह से वो फाइनल डेटा मुझे डिस्प्ले करता है. कोई डेटा नहीं है मेरे टेबल में अलग बात है, बट दैट्स हाउ इट शोज मी द डेटा. आप लोगों के केस में वो फेल हो रहा होगा, वो नहीं चलेगा, उसमें एरर आ रही होगी कि मेटा स्टोर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. यस करेक्ट. जो कि मैंने कल बताया था कि VM में ये प्रॉब्लम है कि स्पार्क सीक्वल और द स्पार्क कंटेक्स्ट और द सीक्वल कंटेक्स्ट व्हाटएवर, it's not able to connect to Hive because of some meta store related problem. But that's what it is. You have to live with it for the time being. So yes Aditi, Hive context object is not callable. ये नहीं आना चाहिए error. Aditi, आप मुझे एक बार query ping करो, आपने क्या लिखी थी? Object should be callable, but it will not return you anything. Aditi, ping me the error. But for most of you, you will get to see that this object store is not able to connect to the meta store, something like that.
हाँ अदिति, तो गलती आप ये कर रहे हो ना, SQL context dot SQL. You are not writing the full correct thing. You have to write इसकी जगह बस SQL context, but ये लिखना तो mandatory है ना, dot SQL. Using SQL context, you are running SQL. So that you have to do, Aditi. And at the end, use this function dot show. अच्छा, ये डॉट शो क्यों जरूरी है? मैंने बताया था स्पार्क इज लेजी. स्पार्क इज लेजी. when you run this स्पार्क विल से ओके मैंने कर दिया. बट जब तू कहेगा अरे मुझे जरा आउटपुट तो दिखा, तब वो कहेगा ओ अच्छा आउटपुट देखना है, तब वो एक्चुअल में रन करेगा. तो यू आर सेइंग शो मी द आउटपुट. तो then it actually run and give you the output. But when you don't write this show, see what happened. When I did this, it told you okay चलो भाई ठीक है आगे बढ़ो, डेटा फ्रेम बना दूंगा मैं. बट मुझे उसने आउटपुट अभी भी नहीं दिया था. It didn't give me the output. It says okay I'll create a data frame, you can proceed. but ऐसा नहीं है. I have to say dot show also immediately. When I say dot show, it gave me कि भैया उस टेबल में कोई डेटा ही नहीं है, rows are empty. तो ये छोटी सी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. आदिति अभी वो चल गए, करण, विपुल, नितिका, निष्ठा. परफेक्ट. ओके, सो वी हैव सीन कि स्पार्क सीक्वल पे काम करने का दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ स्पार्क की जगह एससी डॉट सीक्वल, और सॉरी नॉट एससी, rather SQL context, जो भी SQL context dot SQL, and then the query and then dot show. Okay, so that was about the Spark SQL. Now we will come out of it and we will do something more important. So what we have seen so far is how to access Spark Shell, how to access Spark SQL, how to access Spark R. Okay. Now what we are seeing is how to work on Spark SQL. We have seen that. ये अलग बात है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं आपके VM पे because of Metastore connection issues. Okay, but now we have also seen Spark R, Python, Scala, Java shells, and the SQL shells. We have seen all these shells. But now, guys, what we will do, we will work on actual thing, which is Spark, the core Spark. Okay, so let's start. All of you can do that in parallel with me. Let me start doing this. So अभी हम क्या करेंगे? We will take some data, a data file from internet, maybe Titanic or anything, and we will do certain analytics on top of it. So let's see this. Okay. So guys, we will take the Titanic data, then we will create a table on top of it, and we will run some SQL analytics. So before that, let me show you a simple example. Before we take Titanic, we will do a simple example. Guys, I am pinging you this content. So what we are going to do first, this is an employee table or the employee file which contains the employee IDs, their salaries, and the departments to which they belong. We will write some queries to see how much salary we are giving across each department. That is one. And second is like, are there any duplicates in this data? So for that, we will use Spark. So you given a file, first we need to load this file using Spark. So I'm sharing this data to all of you.
I've given you a small file. Create this file. Move it in HDFS. Once itna kar loge, then let me know. I'm not going to tell you how to create a file, how to move it. I have already moved this file on the Hadoop. Once done, ping me yes. So this file contains the employee IDs, their salaries, and their departments. Few of the records are duplicates. If you see, duplicate as in एक ही employee के दो information है, like employee number 1 and employee number 61. So we will write the query to identify such employees for whom we have duplicate entries. Yes, Aditi. Create the file in Linux, move it to HDFS. Very good. Guys, I'm waiting for more people to tell me this. Guys, I don't think इतना टाइम लगना चाहिए. वर्चुअल मशीन से स्टार्ट कर रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर एक बार आज एक बार पुट्टी को डाउनलोड करने का लिंक सर एक्चुअली मुझे फिर से इंस्टॉल पुट्टी की करना आपको होगा. जरूरत, आपको पुट्टी की जरूरत ही नहीं है. आपको अपने वर्चुअल मशीन पे ही काम करना है. क्लाउडरा में नहीं, आपको पुट्टी की जरूरत ही नहीं है. इग्नोर पुट्टी. पुट्टी इज फॉर डिफरेंट थिंग. हाँ, तो यूज ये फिर वर्चुअल मशीन. मतलब इसको क्लाउडरा में ही करना है या क्लिप्स में करना है? आपको अपने वर्चुअल मशीन पे ही करना है ये सारा काम. आपको मतलब पुट्टी की जरूरत नहीं है. तो क्लाउडरा पे करना है ना? हाँ हाँ हाँ. ठीक है सर. ठीक है, जैसे आप क्लाउडेरा पे काम कर रहे हो वैसे ही करना है. मैं वर्चुअल मशीन नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पुट्टी चाहिए, आपको नहीं. ठीक है गाइस, आई थिंक वी हैव वेटेड इनफ. आई एम मूविंग अहेड. सो दोज हु हैव डन, नाउ ओपन PySpark. Just type in PySpark and go inside PySpark. And let me know once you are inside PySpark. Aditi and others, let me know. Very good. So now what we have to do, guys, see, Spark does not store anything. Matlab, it's not like Hive. Spark may you cannot store the data. You have to process it. Now to process the data, you first need to load it into some variable.
and that is RDD और डेटा फ्रेम. सिंपल. तो कभी मैं आपको कोई फाइल अगर दूं और बोलूं कि इसको प्रोसेस करना है, तो हमें वो फाइल पहले स्पार्क में लोड करनी पड़ती है किसी एक वेरिएबल के अंदर, किसी एक वेरिएबल के अंदर. दैट वेरिएबल कैन बी अ RDD or it can be a data frame. Okay, it can be an RDD, it can be a data frame. So I am not creating an RDD, but I am telling आप लोगों के लिए, I am pinging you the query to create an RDD. I am just pinging it. So Aditi and others, you have to use Spark context because you are using 1.0. You use Spark context and the text file function to read the EMP file. मुझे नहीं पता कि आपने फाइल का क्या नाम रखा है, जो भी फाइल का नाम रखा है वो फाइल को वहां पर पास ऑन कर दो. ओके, तो मैंने आपको ये कमांड दी है, स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल. दिस शुड बी द नेम ऑफ द फाइल. It will automatically read this file from your default Hadoop path, so you don't need to give the Hadoop path. And this is the variable in which the data will be loaded for this file. It will get loaded here. This will be your RDD. So once you run this query, you will run this like fl1, जो भी नाम रखना है, कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का. It will print you that okay, this is an RDD. It's a map partition RDD. Guys, let me know if this is done. Very good, Aditi. Guys, anyone else? Are you not following along? Vipul, Karan. So now, Aditi, if you have to see the data, just try this dot show function and see if it runs or it fails. If it fails, Aditi, you have another function which is known as collect function. Just try which one works and tell me. Dot show or dot collect, whichever. These are the functions to see the data, guys. To see the data of a RDD. If you have an RDD, you can use a show function or a collect function to print its data. Yeah, collect works, Aditi. Perfect. Yeah. Show will not work here. So collect will give you output in a very thoda bad sa way, not that good way. It looks something very weird, but we will see how show will work. Show gives data in a very good way, see, like a tabular format. But that's fine. The purpose is to see the data. That means when you run collect, at that time the actual data file is studied or read by Spark and the data is given to you. Guys, I am not getting response from more people, only 1 or 2 people are replying. Nitika and Nishtha, like where are you stuck? Please let me know, I'll help you. स्पार्क में आप आरडीडी बना पाए हो या नहीं बना पाए हो? Okay, Nishtha, that's fine. Nitika, what about you? Tanya?
अगर आप में से किसी को स्क्रीन शेयर चाहिए, आई विल गिव देम द स्क्रीन शेयर, लेट मी नो. सो स्पार्क में काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप ये है कि फाइल शुड बी लोडेड इनसाइड अ वेरिएबल. ओके गुलजार, नो प्रॉब्लम. दैट वेरिएबल इज नोन एज एन आरडीडी और अ डेटा फ्रेम. कब वो आरडीडी बनता है, कब वो डेटा फ्रेम बनता है, वो मैं बताऊंगा. बट दिस वेरिएबल कैन ईदर बी एन आरडीडी और अ डेटा फ्रेम. So you will read it using different ways. So this is Spark 1.0 syntax. This is Spark 2.0 syntax. Here you use Spark context. Here you use Spark session. .read.csv. Here this is an RDD. Here this is a data frame. Guys, next things are going to be very complicated. Please एक्सक्यूज मी सर. let me know यहाँ तक अगर हो गया है. हाँ गुलजार बोलिए. सर एक बार जो कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस कैसे करना है वर्चुअल मशीन में क्लाउडरा में, ये मैंने ट्राई किया था, 2 बार ट्राई किया था, नहीं मिला. I'll tell you. आपका वर्चुअल मशीन चल गया है या अभी भी हैंग्ड है? सर अभी तो सिर्फ ओपन हुआ है, पर अभी रेडी फॉर यूज है. मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ. जब तक हमारी फाइल एक आरडीडी या डेटा फ्रेम में लोड नहीं होगी, हम उस पर स्पार्क एनालिटिक्स नहीं कर सकते. एंड गाइस, स्पार्क इज मैंडेटरी फॉर अ डेटा साइंटिस्ट. ओके. हाँ गुलजार. हाँ, अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर जो ब्लैक टर्मिनल है वो ओपन कीजिए. सबसे ऊपर जो ब्लैक टर्मिनल है, सबसे ऊपर जो ब्लैक टर्मिनल है, हम टर्मिनल कहाँ से ओपन करते हैं यार? ऊपर से ओपन करते हैं ना गुलजार? टर्मिनल आप कहाँ से ओपन करते हो? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जहां पर एप्लीकेशंस, प्लेसेस एंड सिस्टम लिखा है, एट द टॉप राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड, एप्लीकेशन, प्लेसेस एंड सिस्टम्स. हाँ, अभी नहीं नहीं नहीं, रुको ना, अभी उसके राइट साइड पे जाओ. वहां पे वो ब्लैक सा टर्मिनल दिख रहा है, एक ब्लैक आइकन दिख रहा है आपको. हाँ, ये आपका टर्मिनल है ना. आप टर्मिनल खोलोगे यहाँ से. हाँ, परफेक्ट. अब यहाँ आप टाइप कीजिए पाई स्पार्क. वेरी गुड. एंटर. अब आप पाई स्पार्क में एंटर कर चुके हो. अब आपको क्या करना है? कल को मैं आपसे कहता हूं कि गुलजार, देर इज अ फाइल, 1 TB फाइल, यू नीड टू एनालाइज इट. डूइंग दैट इन हाइव विल बी वेरी वेरी स्लो, but using Spark that will be very very fast. So what you will do, टाइप मैं बता रहा हूँ यहाँ पे गुलजार. टाइप करो, लिखो ABC, ABC टाइप, हाँ, इक्वल्स टू SC डॉट टेक्स्ट फाइल, TEXT टेक्स्ट फाइल, फाइल का F कैपिटल, ब्रैकेट में विद इन डबल कोट्स राइट EMP. हाँ, डबल कोट बंद करके एंटर मार दो. परफेक्ट. एंटर. अब टाइप करो ABC और एंटर मार दो. Very good. So what you did, Gulzar, is you created a variable ABC, but this is a RDD.
which store the content of the file. File name is emp, and this emp file is where? This is in your Hadoop, right? But now the point is, Spark is very lazy. उसने ये चेक ही नहीं किया कि ये emp फाइल वहां पर है कि नहीं. Now when will it check it? Write abc dot show, abc dot show. अब तुम कह रहे हो मुझे डेटा दिखा, अब तो उसको फाइल रीड करनी ही पड़ेगी. फंक्शन होता है, शो इज अ फंक्शन. ओके गुलजार, शो इज अ फंक्शन, तो इट शुड हैव ब्रैकेट्स. Gulzar, show is a function. Put brackets around it. After it. Enter. Okay. Now show does not work on RDDs. Show function works on data frames. So on RDD, we have a collect function. So run a collect function on ABC. Gulzar, run the collect function on ABC. थोड़ा fast Gulzar, we don't have that much time. कलेक्ट फंक्शन बोला आपने? Collect. तो कलेक्ट को लिख के एंटर मारूं उसमें? जैसे आपने शो का फंक्शन चलाया है वैसे चलाओ. नहीं Gulzar, मतलब I cannot tell you like spoon feed the things, right? I am saying जैसे आपने शो का फंक्शन चलाया है वैसे कलेक्ट का फंक्शन चलाओ. वेरी गुड. नाउ यू सी द एरर. जस्ट सी द एरर. ऊपर जाओ, एरर क्या आ रही है? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. नहीं अब स्क्रॉल विंडो से स्क्रॉल करेंगे ना. हाँ स्क्रॉल कीजिए ऊपर स्क्रॉल कीजिए. आपको आ रहा होगा कहीं पे कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट रीड द फाइल. इस तरह से ऊपर करो. हाँ स्क्रॉल अप. स्क्रॉल अप. Wait, see, you get that input path does not exist. On your Hadoop path, user Cloudera, there is no folder as emp. दिख रहा है आपको? अभी स्क्रॉल मत करना, लाइन नंबर 7 देखो. स्क्रॉल मत करना, लाइन नंबर 7 देखो. Invalid input exception. Input path does not exist. मिल गया गुलजार? गुलजार आप स्पीकर ऑन करके रख सकते हैं. ठीक है, ये सर हाँ मिल गया है. ऑन करके रखो. मैं आपको ही बताऊंगा हैंड्स ऑन क्लास में. अभी आई एम नॉट टेकिंग बैक द कंट्रोल. ओके सर. हाँ एरर दिख गया आपको लाइन नंबर 7 में. इनपुट पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट. उसको जरा दिखाओ सबको Yes, वहां sir. पे होवर. दिख गया, मतलब ये जहाँ कर्सर रखा हुआ है वहीं पे. वेरी गुड. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो स्पार्क इज लेजी. जब तक आपने उसको डेटा दिखाने को नहीं बोला उसने वो फाइल रीड ही नहीं की थी, और जब आपने बोला तो उसने रीड की, और वो कह रहा है वो पाथ ही नहीं है. एएमपी करके कोई फाइल फोल्डर कुछ भी है ही नहीं. करेक्ट. सर ओके सर एक्चुअली नाउ क्लास में चल नहीं रहा था इसलिए बन नहीं पाया. कोई नहीं. दूसरा टर्मिनल खोलो एक और जल्दी फास्ट. यस. हाँ क्या हुआ, कहाँ गया सर सब? वो कई बार सर ऐसे दूसरा टर्मिनल खोलने पे कर्सर अटक जाता है, कई बार ऐसा हो रहा है. वेट बार बार क्लिक मत करना उसे. हाँ अब यहाँ जी पर सर. करो HDFS DFS -ls. मतलब मुझे हडूप का अपना डेटा दिखाओ. HDFS DFS. अच्छा हाँ, DFS लिखना था. स्पेस देना है उसके बाद
HDFS DFS space hyphen LS LS मतलब लिस्ट एंटर। आपने अभी तक कोई फाइल ही नहीं बनाई है Hadoop में? सर नहीं बनी है। आप कंट्रोल मुझे दे सकते हो? कोई तरीका है कंट्रोल मुझे देने का अपने लैपटॉप का, इसका स्क्रीन का? सर सर टीम वेयर के थ्रू दे दूं? लीव इट सर रहने दो। ऊपर ऑप्शन नहीं, सर ऊपर ऑप्शन आता है रिमोट कंट्रोल का, ही कैन सी इट इफ ही इज द प्रेजेंटर। देखो जरा एक बार गुलजार। कम आउट ऑफ द वर्चुअल ऑप्शन, मशीन। हाँ जी आ गया। अभी सर देखो ही कहीं इज ऑप्शन। ओपन इट थ्रू वेब। नहीं सर, वेब से खुला है, वो नहीं आ पाएगा शायद। चलो लीव इट। गुलजार गो बैक यस। सर तो तो क्लाउडरा में वापस जाऊं ना? आप मुझे वापस कंट्रोल दे दो क्योंकि हम इतना टाइम नहीं लगा सकते। आप कंट्रोल मुझे वापस दे दो। Next time I'm giving you the control, okay? सर मैंने सिर्फ एयरलाइन डाटा बना रखा है, the That is rest I good. think. That is good. That is good. We will use airline data. Okay. हमारा पर्पस है एनालिटिक्स करना, डेटा कोई भी हो। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो मी कि HDFS में आपके पास फाइल पड़ी है एयरलाइंस की। अच्छा ये रही। Yes, sir. वेरी गुड। गो इनसाइड पाइस पार्क। ओके तो अब हमें क्या करना है निष्ठा, देखो जो भी फाइल आपको दी जाएगी उस फाइल को सबसे पहले हमें स्पार्क की एनवायरनमेंट में लोड करना है। तो वी विल यूज स्पार्क कॉन्टेक्स्ट टू लोड इट। ओके so you can say like whatever variable name you want to give, say ABC or whatever. Type in, I'll tell you, type in ABC equals to sc dot text file. Very good. And within double brackets give that name airlines dot CSV. जो भी नाम था उस फाइल का, I don't know. Okay, now type in ABC and enter. So ABC is a RDD. अब हम RDD यूज नहीं करते हैं, RDD पहले यूज होती थी, बट वी शुड नो कि RDD कैसे बनती है। Spark context helps you create an RDD. Now you need to see the content. Okay, abc.collect. तो आपने भी फाइल का नाम गलत दिया है, airlines.csv था, आई थिंक एयरलाइन डेटा नहीं था वो। Okay. Scroll up, I think it was airlines.csv. Scroll up, or scroll up. Yep. Okay, it's not there. It's airlines.csv as far as I remember, Nishta. एयरलाइन है, एयरलाइन का नहीं है, एयरलाइन है। Yes, आपने वो गलती से। ओके Yeah. वो बनाते समय मैंने। हाँ that's fine, that's fine. So here this variable will store the data, the entire data. But ऐसा नहीं है कि it will store the entire data, वरना तो वो मेमोरी भर जाएगा। It will just point to that data. Yeah, so it's showing you all the records, though in some weird manner, but it's showing you all the data. Okay, and now Nishtha, we can write the queries like select query, the group by clause. No, you cannot do it like SQL. No, leave it. Wait.
but RDDs are not that friendly. RDDs are not that user friendly. So that's why we avoid them, and we will go into data frame now. So Nishtha, now we will create a data frame for the same file. So there are multiple options. A, you can convert an RDD into a data frame. So type in that, create a new variable Nishtha like XYZ equals to ABC dot to RD to DF to and DF capital, data frame का DF capital. Okay. Wait. So guys, what I am doing is ABC is a RDD, and working on RDD is very time consuming. So we prefer data frames because data frames A are faster than RDDs. They have schema. They look like a table. Okay, they have a schema, and querying them or writing analytical queries on them is comparatively easy. So what we are doing is we are creating XYZ, which will be a data frame. So ABC dot to data frame. So we are converting ABC to a data frame. Put brackets around it, Nishtha, because it's a function. Enter. Okay, wait. Now you see guys the error. Please read it. Type error. Cannot infer the schema for the type. Matlab, as I told you, a data frame needs to have a schema. Schema का मतलब column names. तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने RDD को डेटा फ्रेम तो बनाना चाहा, बट आपने स्कीमा तो दिया ही नहीं, तो गड़बड़ है. तो हम जो 2DF फंक्शन है उसके अंदर स्कीमा डाल सकते हैं कि भाई कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स का नाम क्या है, टाइप क्या है, हम डाल सकते हैं. बट अगेन वो एक लंबी प्रोसेस है, तो वी वांट टू अवॉइड दैट आल्सो. तो देखो हमने RDD बना लिया, RDD को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट भी किया, बट वो कन्वर्ट करते समय फेल हो गया बिकॉज वी हैव टू गिव स्कीमा, कॉलम नेम्स एंड कॉलम टाइप्स इन द 2DF फंक्शन. तो ये इतना लंबा रास्ता लेना ही क्यों है कि पहले RDD बनाओ फिर RDD से डेटा फ्रेम बनाओ, राइट? क्यों ना हम डायरेक्टली डेटा फ्रेम बना लें. वेरी गुड, वी कैन डू दैट. वी हैव SQL context, right? So now Nista, create another variable PQR equals to, ऊपर स्पार्क कंटेक्स्ट के साथ आपको एक और चीज मिली थी, SQL context. So use SQL context dot. हाँ, अब देखो SQL context हाइव से डेटा रीड करने के तो काम आता ही आता है. अगर आप SQL context dot SQL लिखते हो तो वो हाइव से कनेक्ट करता है, लेकिन अभी हमारा काम हाइव वाला बचा ही नहीं है, तो उसको इग्नोर करो. अभी हमें क्या करना है, SQL context को यूज करना है फाइल रीड करने के लिए. Yes, we can do that. SQL context dot read dot CSV. Write it, Nista, dot read dot CSV. Yes, within brackets, give the name of that file. Wait. Object has no attribute CSV. एक बार वो सिंटेक्स दोबारा दिखाओ जो आपने लिखा. हाँ, डॉट रीड डॉट CSV. इसमें से डॉट रीड ही रखना, जरा डॉट CSV हटा दो. SQL context डॉट रीड बस इतना ही रखो, और एक बार रन करो उसको. Data frame reader is not callable.
सर आई थिंक डेटा के नाम में से .csv रिमूव करना होगा। ना 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 ना, देखो एरर पढ़ो हमेशा ना। वो डेटा फ्रेम रीडर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो और उससे पहले वो कह रहा है हैज नो एट्रीब्यूट सीएसवी, तो मतलब फाइल के नाम में गड़बड़ नहीं है, ये हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना वो गलत है। अप एरो करो वापस, अप एरो, अप डाउन एरो जो भी आपका है, वापस से वो आ जाएगा ना जो आपने टाइप किया था। अप डाउन एरो नहीं चलता है क्या लैपटॉप पे? हाँ, अभी डॉट रीड डॉट टेक्स्ट करना, डॉट रीड डॉट टेक्स्ट, टी टेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, डॉट रीड डॉट, डॉट रीड के बाद आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट फंक्शन। अब ये वन डॉट और टू डॉट में बहुत फर्क आ गया है, तो वो कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, याद रखना। हाँ, अभी हो गया। अभी पी क्यू आर करो, पी क्यू आर को टाइप करो, पी क्यू आर, एंटर। हाँ, अभी आप देख रहे हैं ये डेटा फ्रेम बन गया है। तो व्हाट वी हैव डन गाइस, आई एम अगेन टेलिंग यू, हमने सबसे पहले स्पार्क कंटेक्स्ट यूज किया, बट वो आरडीडी देता है। आरडीडी को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसमें स्कीमा अटैच करना पड़ता है, लंबा काम है। तो हम सीधा सीधा सीक्वल कंटेक्स्ट जब भी यूज करते हैं, सीक्वल कंटेक्स्ट हमेशा डेटा फ्रेम बनाता है, चाहे वो हाइव का टेबल रीड करके लाए, चाहे वो फाइल रीड करके लाए। तो फाइल रीड करने के लिए हम कहते हैं डॉट रीड डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट फाइल। तो एयरलाइन डेटा इज ऑल्सो टेक्स्ट फाइल, वी कैन रीड इट। तो निष्ठा एक बार ये सिंटेक्स सबको पिंग करो, पी क्यू आर वाला। Others will also use SQL context to read their file, whichever file they. अच्छा, आप नहीं कर पाओगे? मैं टाइप कर मैं टाइप कर रहा हूँ PQR, आदिति, इट वर्क फॉर यू? मैंने कर दिया है पिंग ये। ओके परफेक्ट आदिति। गाइस मैंने आपको पिंग किया ये। अभी मैं 1.0 से ही चल रहा हूँ, मैं 2.0 पे नहीं जा रहा हूँ, वरना आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे पैरेलली। तो SQL context dot read dot text and read, give the file name guys। अब देखो निष्ठा, now from here we start the main Spark। We have a data frame named PQR, now show its content, PQR dot show। so data frame पे show function चलता है, एंड अब आप देखोगे कि वही डेटा कितना अच्छा दिखेगा कंपैरेटिवली। See, this data comparatively makes some sense, right? It looks better, but the problem is still there is a problem guys. What happened is your data is taken into a single column, it is not split it into the 4 columns. Yes Aditi, you are right. The reason being it was a CSV file na? And the function we used was a text function. That's what the problem is. 1 second.
Next time pinging you a command, please try that out. You can use that PQR, okay? No, not lines, because your variable was this thing, no? PQR. नहीं निश्चा, देखो अभी मैं आपको बोल क्या रहा हूँ करने को, वो समझो पहले। हमने क्या किया, हमने SQL कंटेक्स्ट से CSV फाइल लोड कर ली, बट अब प्रॉब्लम वही है कि 1.0 में वी डोंट हैव प्रॉपर फंक्शंस, मतलब उसको करने का तरीका थोड़ा लंबा है। तो अब हमें इस हर एक लाइन को स्प्लिट करना है based on the comma, that if every line contains a comma, we need to split it. So in Python we know there is a lambda function, right? And there are map and filter functions, right? This is Python. So you have to apply your Python knowledge to split each line into 4 columns. So what you will do, you will take that object PQR and you will map each line to a function, a lambda function, and just split it based on the comma. So just do that. That's fine, Aditi. Wait. Do that. Type in this Nishta as is. Sir, so it needs to be saved in parts only. Parts को parts ही रहने दो. हाँ, parts को parts रहने दो. Okay, Aditi, no problem. Let's see. We will go one by one. Pipeline RDD is not. Sir, it's a separator. Can you use collect, Aditi? Can you use collect? Sir, is it a separator? Lambda. 1 minute. हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सेपरेटर? अरे नहीं, वो L दैट्स अ एट्रीब्यूट L. पाइथन में आपने लैम्डा फंक्शन यूज नहीं किया क्या? लैम्डा x colon x dot, you put a function. ओके अदिति, नो प्रॉब्लम. हाँ, अभी पार्ट्स को प्रिंट करो. पार्ट्स है क्या? It's a Python RDD. Okay, now say parts dot collect. Show the error. What is the error? Attribute split error. Attribute split. Concurrent exception. Types split. Attribute error. Attribute error. Split. Okay. Scroll up. Caused by the Python exception. New worker.py. Scroll up. I'm trying to convert the 2.0 into 1.0, so this will happen. DAG scheduler, array buffer. Okay, scroll up. Okay, that's it. Come out of it. मतलब सबसे लास्ट लाइन पे चले जाओ. आप एरो करो एक बार. आप एरो एक और बार. हाँ, तो देखो गाइज, मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ यहाँ. पहले मैं वो समझा देता हूँ. चलना ना चलना, इट्स अ डिफरेंट थिंग. कि हमने जो भी डेटा लोड किया, now we need to split it into columns. So we use a map function. Python में we have a map function, right?
using the map function, we are applying the lambda function on each row, where L represents the row, and L dot split means split each word which is separated by comma. So you'll get 4 columns for each row. And then I was just printing this to see the data, but it's not working somehow. 1 second, what I can do. I'm just thinking, okay, Nishta. But meanwhile, guys, please try to understand what happens here. और खुद से भी गूगल कर सकते हो meanwhile आप. I'm just trying to do it. So the error that you are getting is कि वो split function को नहीं समझ पा रहा है. Split function is not understood by it. अगर आप स्क्रीन पे Insta की स्क्रीन पे लाइन नंबर 5 देखें तो attribute error split means the split function is not understood here. तो अदिति मतलब बात ये थी कि वो मैप फंक्शन ही नहीं चला था. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कलेक्ट या शो नहीं चल रहा है, क्योंकि लेजी इवैल्यूएशन है ना अदिति. तो इसका मतलब है कि वो मैप फंक्शन ही नहीं चला था, राइट? तो वो मैप फंक्शन ही गड़बड़ है. लेट मी थिंक अबाउट इट 1 सेकेंड. हाँ करण, मतलब देखो यार, आप लोग ट्राई करो. अगर कोई किसी का रिजॉल्व हो जाए तो बताओ मुझे, बिकॉज मैं पाइथन 2.0 पे चला रहा हूँ, वहाँ के फंक्शंस अलग है. No, Nista, don't go into that. I'm pinging you a different or easier approach. So Nista, I have pinged you something. Just try that. I pinged it to all. Just try that. Using PySpark, so see, the map function actually works on the RDD. Okay, map function works on the RDD, not on the data frame. So that was the problem. So we have a PySpark split function for data frames. So we will use that. Okay. So you do this Nista split underscore call. ये तो आपका एट्रीब्यूट कुछ भी नाम रख सकते हो, वेरिएबल इक्वल टू PySpark.sql.functions.split. So in PySpark there are a lot of packages. Actually this is a package. In PySpark there is a SQL package which contains a split function. Now data frame में आपको अपने data frame का नहीं DF नहीं आपका data frame का नाम था PQR, right? PQR. And then yeah, within that bracket, no, there's a square bracket. Yeah, within single quotes the name of the column, which was value. I think yeah, that was value.
Just type in value, we will see later. Yeah, quotes, close it, comma. Yeah, within inverted quotes. You put double and single, right? Put single, yeah, and bracket, yeah. Then run it. Let's see. Okay, now show what the split call is. Split underscore call. No, just show split underscore call. What it shows. Okay, so it did certain splits, and then it's not callable. I'm pinging you something. Wait, I'm pinging you something. Wait. Do this. Dot show करो इसमें जरा dot show करो एक बार. Just see if it is coming. Okay. Wait, I am telling you the proper stuff. Do this. So what we are doing is from that splitted data, we are fetching columns one by one and adding them into a new data frame. Aditi, instead of DF, you can put PQR. What happened, Nishta? What's the problem with column? EOL while scanning the string literal. What's the syntax? Okay, perfect. Now instead of DF, put PQR because our data frame was PQR. Yeah, just do put PQR dot PQR dot. Oh yeah, sure. Very good. So it's done. It's resolved. I'll tell you how to do it further. Okay. So instead of, so what you do, type in that command again, arrow, put the arrow again, yeah, arrow, up arrow, yeah. जो नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, हाँ, जो शुरू में आपने PQR दिया है, शुरू में जो PQR है, जो नया डेटा फ्रेम बना रहे हो ना, देखो आप आदित्य एंड निष्ठा, आप पुराने डेटा फ्रेम को यूज करके एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हो. तो just try to load it into a new data frame, make it DF, do it DF, run it. Now DF dot show, just see what happens. It's not removing that. Wait. Okay, that's not a problem. हम क्या करेंगे? No, yeah, Aditi, that's perfect. एक बार ऊपर scroll करो. Let me explain कि हमने किया क्या है before we go into the next steps.
This is done. ठीक है, we have resolved it. Okay, scroll up, Nistha. Scroll up. Let me explain you. Scroll up, scroll up, scroll up, scroll up to the very first thing that we were doing, where we read the file, right? जहाँ पर हमने file read की थी. बस 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 नीचे 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 स्क्रॉल. हाँ देखो, हमने क्या किया, हमने SQL कंटेक्स्ट को यूज करके कोई फाइल रीड की. अब क्योंकि read.csv फंक्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है 1.0 में, 2.0 में वो अवेलेबल है, इसलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं आती. 2.0 में हमारे पास read.csv फंक्शन है. 1.0 में वो 1.0 में भी है बट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. उसके लिए हमें कुछ जार फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है, कुछ सेटिंग करनी पड़ती है. तो उसको अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, हम read.text फंक्शन ही यूज कर रहे हैं. अब read.text फंक्शन ने उस डेटा को एज अ टेक्स्ट डेटा रीड कर लिया, तो उसने आपको एक ही कॉलम में सारा डेटा लोड करके दे दिया. अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को करना है स्प्लिट. अब जो मैप फंक्शन हमने यूज किया था वो RDDs पे यूज होता है, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि वो यहाँ पे चल जाए, बट that map function works on RDDs, not on the data frames. So on the data frames, we have a split function, which is separately available. So we used that and splitted our data. But when you split the data, you don't get a data frame, rather you get a iterable object types. So scroll down, wherever you use that function, split function. हाँ, further scroll down. थोड़ा आई थिंक नहीं 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 नहीं, ऊपर आपने स्प्लिट किया था ना, विद कॉलम पे आ गए ना आप, तो स्प्लिट ऊपर किया था आपने, जो आपने पाइसपार्क का फंक्शन यूज किया था स्प्लिट करने का. हाँ, दैट्स इट. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन लाइक PySpark.sql.functions इज अ पैकेज. नॉर्मली जब हम .py फाइल लिखते हैं तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट PySpark.sql.functions, और फिर हम स्प्लिट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला कि ये पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का ये जो कॉलम है, वैल्यू नाम का कॉलम, उसको कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट मार दो. तो उसने स्प्लिट मार के 4 कॉलम बना दिए. ठीक है, तो जो स्प्लिट कॉल करके वेरिएबल बना है वो अगर आप मतलब देखेंगे क्या है, तो जो आपने लाइन सिलेक्ट की है उसकी 6th लाइन सिलेक्ट करो एक बार. निष्ठा, जो लाइन सिलेक्ट की है उसके नीचे की 6th लाइन. हाँ, तो अब आप देखेंगे कि स्प्लिट कॉलम जो आपको मिले हैं वो ना तो कोई RDD है, ना तो कोई डेटा फ्रेम है. तो सीधा सीधा आप उसको ना तो कलेक्ट कर सकते हो, ना शो कर सकते हो. ओके, निष्ठा एंड अदिति, इट इज जस्ट अ कॉलम with some splitted values. It's just a column with certain splitted values. It's like an array. It's like an array. So you have to access each and every element of an array, like 0th column, 1st column, 2nd column, 3rd column, like this. Okay. So if you go to the third last line on your screen. हाँ, ये सही से टाइप नहीं की थी शायद आपने, इसके नीचे स्क्रॉल करो. हाँ, स्क्रॉल, हाँ, ये वाली लाइन नहीं, ये इसमें भी एरर थी, और नीचे स्क्रॉल करो. इसमें आपने, हाँ, सिंगल कोट डबल कोट का इशू था ना, ये भी गलत थी. हाँ, ये ठीक है. अब देखो होता क्या है, विद कॉलम इज अ स्पेशल फंक्शन. विद कॉलम इज used to add additional columns in a data frame. It's like you have a table, you're adding more columns. So that means you have a data frame. Okay, you have a data frame and you are adding more columns into that data frame. So you need to specify the column name and the column value. So 2 attributes, the column name and the value. So you are saying, okay, PQR dot, मतलब PQR data frame में you want to add a new column, PQR dot with column. Name of the column is name1 and the data is coming from split call get item 0, means the 0th column of that array which got splitted above. Okay, so now what you need to do, Nishtha, you need to call this with column function 4 times for index 0, 1, 2, 3. And instead of giving the name as name1, you should give the proper name of that column.
समझ गए Aditi, Nishtha? You need to call that 4 times because you have to add 4 columns, 4 new So, columns. sir, in this data, we cannot separate it as it is given year, quarter, average, whatever it वही is. हो रहा है. That's what is happening. But step by step चलना पड़ेगा ना हमें. एकदम से कुछ नहीं हो सकता. Programming में there is a step by step approach. Getting it? So what you need to do is you need to first add 4 columns and then we will drop the first column. Right, Aditya and Nishtha? Why I'm saying Aditya and Nishtha again and again? Because one is doing it and another is pinging me again and again. But I'm not getting response from other people's. Okay. So Nishtha, so keep adding 4. No, you have to change the index. Okay, you have to change the index to 0, 1, 2, 3 और उसका नाम चेंज करते चले जाओ. ईयर, क्वार्टर, एवरेज, मतलब जो भी बाकी लोगों का होगा. सो ईयर आपने पहले बना लिया. देखने हैं डेटा फ्रेम के. दिस इज बेटर निष्ठा, दिस इज बेटर. एंटर 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 मार दो. अब दोबारा करो. अब क्वार्टर ऐड करो इसमें. क्वार्टर with index 1 you add quarter at index 1. ये एक बार चारों करो आप and then let me show me the data frame once it's built. कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, आप उतना मत जाओ. ये वो था ना. Sir, year is already separated. Year is already separated. नहीं ईयर, क्वार्टर, एवरेज और लास्ट कॉलम क्या है? दैट वाज नंबर ऑफ सीट्स, राइट? नहीं, नंबर ऑफ सीट्स कल ही तो किया था हमने, भूल गए? टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कुछ भी नाम रख दो. नंबर ऑफ सीट्स. स्पेस कभी नहीं देना होता कॉलम नाम में, कभी स्पेस नहीं देना होता और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं देना होता. डॉट भी हटाओ. ये छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड. एंटर. Now print the DF or PQ or whatever. बाकी सब कहाँ गया? चलो लीव इट. वेट. अभी जितना हो गया पहले हम उसको समझते हैं. नाउ आई विल टेल यू क्या हो रहा है. But now what happened is we are able to split it into the 4 columns and we have added each and every column inside this data. Okay. Sir, it's not overwriting. That's what. It should not override. Okay. I have to check कि आपके column का नाम क्या है, data क्या है. But you have added 2 columns. Just go to that. We can look into that further later. But now what happens is, wait, we have to remove the first column. We need the last 2 columns or last 4 columns, but not the first column. So in data frame, they have their own programming language known as DSL. I'm pinging you DSL. This is known as domain specific language, DSL, or domain specific language. So what now we need to do? We need to run a select query on this data frame. So df is your data frame, right? So just type in df, enter. Okay, so this data frame contains 4 columns. If you look at value,
name 1 and number of seats, right? So what you will do is you will say df.select, do df.select, select, yeah, and now within brackets uh, give the name of the column, say name 1, name 1, yeah, and at the end put show. इसको रन मत करना, वेट। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम एसक्यूएल में जैसे सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, लाइक कैसे लिखते हैं, अगर ऊपर वाला आपका टेबल है, वी विल से सिलेक्ट नेम 1 फ्रॉम दैट टेबल, बट हियर इट्स अ डेटा फ्रेम स्पेसिफिक लैंग्वेज, डेटा फ्रेम की लैंग्वेज है ये, जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज डीएसएल कहते हैं। आप कहते हो डेटा फ्रेम का नाम डॉट सिलेक्ट, इसी तरह हम डॉट सॉर्ट, डॉट ग्रुप बाय, डॉट ऑर्डर बाय, सब कुछ कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज लाइक अ वर्ड, df डॉट सिलेक्ट दिस, डॉट ग्रुप बाय दिस, डॉट एग्रीगेट बाय दिस, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ नेम कॉलम को सिलेक्ट करके शो कर रहे हैं, एंटर मारो। See, we can select a particular column, but now if you have to select more than one column, Nishta, instead of name, put a array. Put an array of 2 columns. Make it an array like square brackets के अंदर, just give the 2 column names, square bracket के अंदर name 1 and the another one which is number of seats. Do this. See, you are able to see the 2 columns. But now instead of show, Nishta, instead of show, assign this into a new variable, say df1. Remove the show because we don't want to see it. Assign it into a new data frame, df1. So guys, when you write a program, वो 100 लाइन के क्यों बन जाते हैं हमारे प्रोग्राम? इन्हीं स्टेप्स की वजह से कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग होती है हमेशा। इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही लाइन में सब कर दोगे। एंटर करो। हाँ, अभी df1 डॉट शो करो। See, तो Aditi and Nishtha, we were able to split the data, and out of it we are able to create a new data frame by selecting only the desired columns. Clear? मतलब everyone? अभी वो अलग बात है कि हमारे वो बाकी 2-3 कॉलम कहाँ गायब हो गए, उसमें भी हम देखेंगे, बट लेट्स गो लॉजिकली। सबको समझ आया यहाँ तक? ये स्पार्क 2.0 में एक लाइन का काम था, ये 1.0 में हमें जुगाड़ करना पड़ा इतना ज्यादा। करण, विपुल, okay, okay. Gulzar, you are getting this. This is the programming, okay? In real world, this is how you have to work. You have to solve the problems step by step. Even I don't know कि शुरू में क्या होगा. I have to also Google sometimes, but we have to follow a proper approach. मैंने भी Google ही किया इसको आधा, ठीक है? अभी आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए निष्ठा। अब हम वो देखते हैं कि आखिर आपका डेटा गायब क्यों हो रहा है, वो बाकी कॉलम्स कहाँ चले गए। हाँ बस बस बस, नहीं 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 नहीं, वो जहाँ पे हमने चारों कमांड्स लिखे थे, चारों कमांड्स आपने जहाँ लिखे थे वो दिखाओ। हाँ बस 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 बस, यहाँ क्या हुआ। निष्ठा आप ना इसको नए डेटा फ्रेम में मत डालो, PQR में ही लोड करो सब कुछ। मतलब PQR इज इक्वल टू PQR डॉट विद कॉलम, बस सिलेक्ट कर लो वो सारा, बार बार टाइप मत करो, वहीं से कॉपी पेस्ट मार लो। कंट्रोल सी मत करना, सेशन किल हो जाएगा। कंट्रोल सी नहीं करते हैं कभी भी, रिमेंबर, नेवर डू कंट्रोल सी while you are doing programming. नहीं गुलजार, हाँ मतलब दैट्स फाइन, बट जो यहाँ हो रहा है उस पर फोकस कर लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं निष्ठा, आपको उसको पहले नोटपैड में करो ना, नैनो, एक नया टर्मिनल खोल लो, नैनो
में लिखो, इसको किल मत करो, इसको खुले रहने देना। नहीं नहीं नहीं, इससे बाहर मत निकल जाना, सारा सेशन गायब हो जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम विद स्पार्क, जो भी किया है सब चला जाएगा। एक नया टर्मिनल खोलो, उसमें नैनो ओपन करो। नैनो, टाइप नैनो, एंटर, पेस्ट। हाँ, वो शुरू में सबके आगे से वो डीएफ वाला चीज हटा दो, एरो से ही जाना पड़ेगा तुमको। हाँ, सबको पीक्यूआर में ही लोड करो। सबको पीक्यूआर में लोड करो। हाँ, इट्स समथिंग लाइक यू आर कंकैटिनेटिंग इट। ओके, इट वर्कड अदिति, राइट? तो वो वही प्रॉब्लम था, वो सेम डेटा फ्रेम में ही हमें उसको लोड करना चाहिए, वही प्रॉब्लम था वो। तो दैट हैपन समटाइम्स जल्दबाजी में। ठीक है, यू गो टू द अनदर वन, अनिष्ठा, द अनदर स्क्रीन। हाँ, पेस्ट इट, वेरी गुड। अब pqr डॉट शो, अभी हो गया ना? वो एडिशनल कॉलम्स तो आ ही रहे हैं, बट वो तो हम ड्रॉप कर देंगे ना सिलेक्ट क्वेरी से। ठीक है, अभी हो गया, राइट निष्ठा? यस सर। ओके, अभी गाइस किसी को डाउट है हमने क्या किया, कैसे स्प्लिट किया है? फिर मतलब हमने किया, डीएसएल क्या होती है? डीएसएल इज नोन एज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अभी हम उसी पे थोड़ा और काम करेंगे। तो निष्ठा, लेट्स यूज पीक्यूआर ओनली, टाइप पीक्यूआर एंड एंटर, पीक्यूआर एंड एंटर। हाँ, पीक्यूआर एक डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम का हमेशा स्कीमा होता है। आप देखो, कॉलम का नाम और डेटा टाइप, वैल्यू इज स्ट्रिंग, नेम इज स्ट्रिंग, ईयर इज स्ट्रिंग, लाइक दैट। ओके, तो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने पहले तो एक आरडीडी बनाया, फिर हम आरडीडी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे थे, बट वो स्कीमा मांग रहा था, तो हमने एसक्यूएल कंटेक्स्ट को ही यूज किया सीधा सीधा, और अपना डेटा फ्रेम बनाया। लेकिन वो डेटा फ्रेम में क्योंकि डॉट रीड सीएसवी फंक्शन नहीं था, तो टेक्स्ट की तरह रीड हो गया। हमने उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद हमने डीएसएल यूज की और सिलेक्ट करा जो कॉलम हमें चाहिए। वेरी सिंपल, ठीक है? अब डीएसएल को यूज करके आप ग्रुप बाय, जॉइन, everything can be done. DSL is that powerful. You have two data frames, you can join them, you can union them, you can do everything which is like SQL, but the syntax is different. So now, for example, Nishtha, we want to sort this data uh, based on say the column is say number of seats, nahi, average price. There was average price column, yeah. So we want to sort this entire data based on a column average. ओके, सो नहीं नहीं, ये कॉलम नहीं है, ये डेटा है। अभी तो निष्ठा हमको ये वाला कॉलम भी रिमूव करना है इसमें से, आइडियली पहली रो रिमूव भी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, दैट आई विल टेल यू लेटर। अभी मैं क्या कह रहा हूं, नाउ वी विल यूज डीएसएल फर्दर, वी विल सॉर्ट दिस। तो पीक्यूआर डॉट से पीक्यूआर डॉट, अब सिलेक्ट तो क्या करोगे आप इसमें, सिलेक्ट स्टार करना, सिलेक्ट स्टार डॉट सिलेक्ट स्टार ब्रैकेट में स्टार, नहीं नहीं, अरे ब्रैकेट में होगा ना सब कुछ, एवरीथिंग इज अ फंक्शन हियर। हाँ, डॉट शो, स्टार को सिंगल कोट्स में डालो, मतलब मैं सारे कॉलम सिलेक्ट करने का तरीका देख रहा हूँ बस। हाँ, वेरी गुड, या, so we are doing select star from the table. Now pqr dot select dot sort, and within sort give the column name average. show सबसे एंड में होना चाहिए हमेशा, ठीक है? sort, हाँ, विद इन ब्रैकेट
जिस कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है, से एवरेज। हाँ, अब शो। So is our data sorted? Right, Nishta? Yes, sir. This is like select star from the table, order by average, like that, right? Similarly, you can do group by, you can do aggregate, average, everything. I'm sharing a link. Okay, wait. You have to read it after the class. You have 3 days. Whatever you read from PySpark, not for Spark, okay? I have pinned you certain links. You can study them. Okay, so you can do that later, but yeah, so you can do all these things later. अभी तो उसे minimize कर दो. Yeah, so we have understood that, okay, we can load a file and then we can do analysis on that file when it is a data frame, right? But the problem is you are not able to write the SQL queries. It will be great if you can write a SQL query on this data frame. So what we can do, we can convert this data frame into a table, guys. We can convert a data frame into a table so that we can run direct queries like select star from a table, group by. That will be easy for you, because learning DSL itself is time consuming, right? कि कौन सा फंक्शन है, सॉर्ट है, और उसके अलावा एग्रीगेट करने का तरीका अलग है. तो why don't convert a data frame into a table? So let's do that. So now what you have to do is, we have to convert this data frame into a table. The syntax for that is on my GitHub account. Let me just check that. 1 second. आप लोग मेरे GitHub account पे भी देख सकते हो, but this is the command, Nishta. The data frame name dot register temp table. You want to register it as a temporary table, so that will become a temporary table, and give it some name. So ultimately we have converted the file into a temporary table. Give the name of that table. अभी देखो, रुको, df2 क्या है आपके पास? df2 कुछ नहीं है. आपको क्या करना है वहां पे df2 की जगह? It should be what, Nishta? ना, df1 बनाया है आपने? I don't know, means I don't know what is the name you have given. Yeah, it's PQR, correct? So you're converting PQR into a temp table. It should not be employee. It's something else, right? Give proper name. Airlines. It's airlines. ये टेम्पररी टेबल सिर्फ स्पार्क सेशन तक ही रहेगी, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगी. एंटर. अब गाइज आपने PQR को एक टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट कर दिया है. सो नाउ what you can do, you can directly like run this SQL on top of it. So what you have to do, Nishta, now, SQL context dot SQL, SQL context. There was that SQL context thing, right? Whenever you have to run a SQL query, you have to use SQL context. You cannot directly run a SQL query.
So SQL context dot SQL within brackets now select star from airline data सिंगल कोट्स में. अब देखो होता क्या है. अब नहीं ये क्या कर रहे हो आप. सिलेक्ट क्वेरी लिखो ना प्रॉपर एसक्यूएल के अंदर. नहीं क्या कर रहे हो आप. एसक्यूएल स्टार फ्रॉम व्हाट इज दिस. हाँ सिलेक्ट स्टार विदिन सिंगल कोट्स. हाँ पहले आप ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ क्या बताना है मुझे. इसको रन मत करना, बस टाइप करके छोड़ दो. हाँ अब रुको. अब देखो गाइज होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एसक्यूएल चलाने के लिए एसक्यूएल कंटेक्स्ट है. लेकिन अब आप ये सोचो कि एयरलाइन डेटा आपने एक टेम्परेरी टेबल भी बना दिया और इस नाम का हाइव में भी एक टेबल है, तो क्या होगा. तो पहली बात तो इट शुड थ्रो एन एरर कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है. बट मान लो वो नहीं थ्रो करता एरर, तो होता क्या है. स्पार्क फर्स्ट लुक्स इन इट्स लोकल सेशन. It looks for airline data in its local session as a temp table. If it does not get it here, then it go into Hive and check it there. Okay. So first of all, it looks कि भाई क्या आपने कोई temp table तो नहीं बनाया हुआ using register temp table function. Spark 2.0 में ये function का नाम बदल गया है. Register temp table की जगह it's save और register table करके मतलब नाम बदल गया है 2.0 में. But concept वही है, रजिस्टर टाइम टेबल. ठीक है. तो पहले वो देखेगा आपके स्पार्क सेशन में कि कोई टाइम टेबल है कि नहीं. अगर वहां नहीं मिलता तो वो हाइव में जाता है मेटा स्टोर में. ठीक है. तो अब एयरलाइन डेटा इज देयर. अ डेटा फ्रेम PQR इज रजिस्टर्ड एज अ टेम्पररी टेबल. नाउ यू कैन डू एंटर. ना डो ओके. एंटर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है बिकॉज स्पार्क इज लेजी, राइट. यू हैव टू यूज शो फंक्शन ऑल्सो. नहीं अभी एग्जिट नहीं करना है उसको, रुक जाओ. वो चल रहा है वो डेटा रीड कर रहा है. it's doing something. Wait, enter, press enter again. हाँ let it run. It's running a SQL query. It's reading it. See, meta store object store failed to get the default database. Okay, अभी run that query again. Up arrow dot show. See, it's giving you the data. But scroll up. There was an interesting thing that happened. Scroll up. See, you can see an error, guys. A warning. Line number 3. Nishtha, can you point to that warning? Failed to get database default. Scroll down. Scroll this warning. Yes. Guys, देखो. Even though it read the temporary table, but it also tried to connect to Metastore and failed. That the object store cannot connect to the Metastore. It failed to get the default database, returning no such object exception. So, but that's fine. It still is able to give you the data. Why? Because it looked in your local session that this table is there. Even though it cannot connect to Hive, it still gave you the output. समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन है? यहां पर हमारा काम हो जाता है खत्म. स्पार्क कोर, स्पार्क सीक्वल. अब आप कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी यहां लिख सकते हो सिलेक्ट के अंदर. तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो आपको बहुत एक फाइल दी गई है. आप उस फाइल को पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, डेटा फ्रेम से उसको टेम्प टेबल में कन्वर्ट करो और उस टेम्प टेबल के ऊपर अपना ये स्पार्क सीक्वल चला लो. इट विल बी वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू कि आप उसको पहले हाइव में लोड करो और फिर हाइव का क्वेरी चलाओ उस फाइल पे. ऑप्शन दूसरा भी है कि आप उस फाइल को पहले हाइव में लोड करो और उस पर हाइव क्वेरी चलाओ, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेटर. Guys, any questions? I'll open it for all of you to ask question. Nishtha, control मुझको दे दो. It's more than enough. Okay, wait. Nishtha, don't give me the control. Open the browser. Browser खुला होगा ना. Let's see कि browser में हुआ क्या. आखिर पीछे स्पार्क जॉब. हाँ वेट, यहाँ स्पार्क दिख रहा है आपको.
वेरी गुड, ये है स्पार्क हिस्ट्री सर्वर, क्लिक ऑन दैट। गाइज हियर यू कैन सी कि आपने जितना भी अभी ये स्पार्क में काम किया है उसने पीछे स्पार्क जॉब जो चलाए हैं वो यहां दिखेंगे, शो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस। ओके, it's not showing anything here, that's fine. So go to the resource manager, open the resource manager, Hadoop resource manager, yeah. So history server में हिस्ट्री आती है, कुछ देर के बाद लोड होती है, हम यार्न में देख सकते हैं सब कुछ। क्लिक ऑन finished applications on the left hand side, finished applications, right? Okay, click on the applications, at the top you have applications. Okay. Wait. Do one thing, go back to Spark and write a query like select count of star from the table. ये select star को select count star, अरे नहीं, वही रखो, क्वेरी वही रखो। हाँ, नीचे होगा ना क्वेरी कहीं पे। चलो that's fine निष्ठा, go back to that earlier one, जो सबसे लास्ट क्वेरी आपने रन किया था। हाँ, select average, select count of average, select count of average or max of average, do max of average, select max of average, the maximum average value, max average from this, and dot show at the end, do dot show. I'm just trying to run some complex query so that it will run a Spark job and show it in the logs. Acha, wo because it was having this value also. Run a sum function. Sum function should fail because we have a character, so but do it. Sum function. And we can remove the first line. I'll leave it as an assignment to you. It's very easy to remove the first line. You have to simply select the data from the table using a where clause where you ignore the value which contains this average revenue type of thing and load it into a new data frame. Getting it? You can select all the data except the one which contains character value. अच्छा, उसने ऐड कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया होगा एवरेज को। गाइस आप समझ रहे हो वो गार्बेज वाला रिकॉर्ड कैसे रिमूव करोगे? In where clause you will just try to filter out values which are non-numeric, just filter them out from your data. Because one of the row contains headers also, so you have to remove that. तो निष्ठा एक बार दोबारा जाओ स्पार्क में, देखते हैं कि वो एप्लीकेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, स्पार्क में जाइए, हिस्ट्री सर्वर। So yeah, incomplete applications. It's not coming. So let me show you at my end. Give me the control. How this should look like. I show you. Somehow it's not getting reflected here. Give me the control. Very good. So guys, this is my GitHub link. I'm sharing you. जहाँ पर ये मैंने सारे कोड्स वगैरह डाले हुए हैं, और भी बहुत सारे कोड्स हैं यहाँ, आप यहाँ से ले लेना जो भी मैंने हैंड्स ऑन किए हैं। निष्ठा आप ये सारी कोड जो अभी हमने की है वो निकाल के एक बार मुझे ईमेल कर दोगे, मैं उसको गिटहब पे डाल दूंगा। ये जितना भी हमने कोडिंग किया है कैसे, वो अच्छा क्वेश्चन है। आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सारा। सर वर्चुअल मशीन के बाहर नहीं होता मेरा। वर्चुअल मशीन के अंदर आप ईमेल एक्सेस कर सकते हैं।
नेट तो चल ही रहा है, Okay. ठीक है। तो मेरा ईमेल आईडी आपके पास होगा ही, तो वर्चुअल मशीन के अंदर से वो सारा कोड निकाल के ना मुझे भेज देना, मैं गिटहब पे डाल दूंगा सबके लिए। और एयरलाइंस डेटा की फाइल सबके पास है, तो एवरीवन कैन डू दैट। ओके, व्हाट आई एम सेइंग गाइस इज, if you look at my side of the things, I was also running same things which Nishtha is doing, but मेरे लिए चीजें आसान थी। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास spark.read.csv फंक्शन डायरेक्टली है spark 2.0 में। क्योंकि CSV फंक्शन डायरेक्टली था तो मुझे वो सब मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं सीधा फाइल ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता हूँ। सीधा फाइल ऑब्जेक्ट जो मेरा बना, अब ये देख रहे हो, ये जो ये चल रहा है, ये स्पार्क जॉब चल रहा है, ये जो स्टेज ये स्पार्क जॉब, ये देखो मेरे लिए ये काम एक ही लाइन में हो गया था, बट आप लोगों को थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ा, विच इज गुड, यू लर्न समथिंग। तो स्पार्क डॉट रीड डॉट टेक्स्ट फंक्शन आपने यूज किया था, या SQL कंटेक्स्ट जो भी है, एंड I can also register this object as a temp table. Let's see, there is a different syntax. File dot register temp table, right? This is what you did, Nishta. And let's say you created a table as employee. Okay, चल गया वैसे, no problem. So then what I have to do, मैं आपको स्पार्क सेशन वाली सिंटेक्स बता रहा हूँ। तो स्पार्क सेशन dot SQL, sorry, and within that what I need to do, I also need to do what Nishtha did, select star from EMP, sorry, dot show also. So for me it's running map spark jobs. I don't know for Nishtha why it's not showing that. Okay, so guys, जो आप लोगों ने काम किया मैंने भी वही किया। Let me reiterate, I had a file, EMP file, I used spark 2.0, तो मेरे लिए spark session है, आप लोगों को SQL context यूज करना पड़ा। स्पार्क कंटेक्स्ट यूज करोगे, रिमेंबर स्पार्क कंटेक्स्ट RDD बनाता है, SQL कंटेक्स्ट यूज करोगे, और मैं स्पार्क सेशन यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट होता है, दो नहीं होते। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट और SQL कंटेक्स्ट अलग से कुछ नहीं है। जब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गया तो या तो मैं इस पर DSL कर सकता हूँ, बट DSL इज नॉट दैट यूजर फ्रेंडली। DSL मैंने किया यहाँ पे, राइट, सिलेक्ट, एलियास, शो, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू। Rather, what I want to do, I want to convert this data frame into a temp table, register it as a temp table, and then using again, आपने SQL context यूज किया, मैं spark session यूज करूंगा, dot SQL and show it. So मुझे भी वही, बट मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि ये जो रजिस्टर टाइम टेबल फंक्शन है 2.0 में एक नया फंक्शन भी आ गया है, समथिंग सेव और समथिंग करके। लेट मी शो यू, रजिस्टर temp table versus create or replace. So we have this thing also, create or replace temp view, and create temp view has been introduced in Spark 2.0 as a replacement for register temp table. Ultimately difference कोई नहीं है, वो just मैंने पिंग कर दिया है, they have given it like create or replace temp view, create a temp view या create or replace temp view. So let me do that also. Create temp view. Python is indented language. It gave me indent error because there is a space here. There is a space here. See? So that's what Python is. And see, it's saying EMP already exists. Temp view, EMP already exists because I already created this, right?
using register temp table, I created EMP. So I cannot again create that. I need to change its name, say employee. Done. Yes, गुलजार, पाइथन में तो इंडेंटेशन ही होता है ना सब कुछ. और एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड. ये मेरी स्पार्क, ये देख रहे हो, ये इसका ये चल गया. तो मैंने मतलब क्रिएट, पहले रजिस्टर टेम्प टेबल था, अब क्रिएट टेम्प व्यू या क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू इज अवेलेबल देयर. स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, बट या दैट्स another option. But at the same time, I don't know why Nistha you are not able to see that, but let's see this. When you come to the Spark, this thing, अरे क्या हो गया? So what I was telling is, I'm also going to Spark History server, Nishtha, right? You were also going there, but I don't know why it was not working. सर कनेक्टेड नहीं है शायद इसलिए. नहीं, वो होना नहीं चाहिए था प्रॉब्लम आइडली. It's opening, 1 second. हाँ, Gulzar, meanwhile, yeah, ask the question. हाँ, ये खुल गया. हाँ गुलजार, क्या क्वेश्चन था आपका? गुलजार, आप म्यूट पे हो शायद. सर एक्चुअली क्वेश्चन टाइप ये है, तो मतलब कंपाइलर जो लैंग्वेज होती है उसमें इंडेंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. इंडेंटेशन एंड कंपाइलेशन इज अ डिफरेंट थिंग. ओके ओके, सो मतलब कि जावा में तो इंडेंटेशन से फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है? नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता. अच्छा ठीक है सर. बट ये इंडेंटेशन का कंपाइलर या इंटरप्रेटर लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है. वो लैंग्वेज की ओके सर, प्रॉपर्टी है. ठीक है. ठीक है सर. अच्छा देखो निष्ठा, और those who were able to run it, you ideally should have seen so many applications. जैसे आपको MapReduce applications दिखती हैं. So I don't know why it was not showing, but this is how it should look like. So now you are running PySpark shell. Let me open this application. Now in this application, you see the driver was added, and then the executors were added. Certain executors were added, and after their work is complete, they were removed by the driver. They were removed. So whatever was the time between addition and removal was the execution time. It was somewhere around 1 minute. 6:29 से 6:30 के बीच ही सारा कार्यक्रम हो गया. Okay. So here you can see the jobs, and you can also see their logs also, the job logs. For example, this is the application. These are the logs. I can click on this and get the logs. There are some applications which are still running. So there are 8 completed jobs. So these are the logs. These are the jobs that actually I executed. By job, it means to say the commands. So the commands, for example, this is one of the job. This command is one command. So running this command is like one job, show string. So it's like you are running a show command. So I was running this show command, right? So it's showing me the latest show command which I ran. Let's click on this. So the latest show command was this spark.sql this.show.
which was this, giving me this output. It took 2 seconds to complete this. If you look at the details, so it's giving you Java and Scala kind of logs, even though you are working on Python. The logs are still Java logs, see? Because Spark is all Java. You can further click on that, and there is this DAG, right? So you see this DAG. There was a RDD, there was a map partition RDD, like what all happened behind the scene. How much total time was taken and all. You can look into the standard output and standard error. Let me click on standard output. So there is no data actually available here. 1 second. So these are quite good logs if you look at, like, when the executors were added, when they were removed, how much time the process took. Everything is explained here. How much total data was read, like 104 bytes का data था total जो इसने process किया. Okay. These are all the queries that you ran. Total 10 queries were executed, or 11 queries were executed. By queries, it means to say whenever you ran a function like collect or show. Okay. So guys, there is a concept of transformations and actions in Spark. So whenever you are doing filter, select, they are all transformations. But as soon as there is an action like show, collect, at that time normally the Spark works. So Spark work only when it see an action like show, collect. जब तक ट्रांसफॉर्मेशंस आप उसको देते रहोगे, like sequel, select, filter, it will keep building the DAG. But when it see the action, it execute the DAG. Okay. So this is how it looks like. In the next class, we will talk more about this. We will take one more. We will take your project, and in the next class, we will work on that project, whatever is in the LMS. Okay. So this was about Spark Core, Spark SQL using RDDs and data frames. I will tell you in the next class difference between RDDs and data frames. But you know that data frames contains a schema. You can run SQL on top of them. They are better and faster than RDDs. Other than that, I think there are a few more differences we will talk about. Any questions, guys? Any question? So we have talked about these things which were the part of our scope. We are not doing streaming, MLlib, graphics, or Spark. We are not doing all these things. Okay, so in the next class, we will further take your project and we'll work on Spark SQL again. There is one more thing. So there are these three things in Spark, okay? RDDs, and after RDDs came data frames, and after data frames came data sets. We normally don't use data sets that much, but I'll tell you in the next class the detailed difference between RDD, data frame, and data set. You can go to this link. I'm just meanwhile pinging you this link from the Databricks website. So Nishta, I don't know why you're not getting it. Normally even in VM also we get it. Spark SQL on cloud only. It's fine, means we will I'll do on the cloud, you guys can do on the VM, because I have now told you how you can do it on VM. I will give you a file, you will just convert that file into a data frame
and then register it as a table, and then we will run a SQL. Same. So there is no Sir, problem. हाँ बोलो. sir, actually, if we happen to go for an interview for this kind of job, Spark and all, so will these basics do sufficient? Matlab, if they happen to ask us in details, like we don't have that software ना हमने कोई AWS पे खरीद रखा है cloud, so will that हाँ, suffice? this is more than enough what I am telling you, because cloud पे मैंने कुछ अलग से तो किया नहीं है. मैंने आप बल्कि cloud पे तो it was even easier. What we did on your VM was even more detailed, right? यहाँ तो सीधा सीधा ये फंक्शन था. आपके मशीन पे तो हमने we used the Spark PySpark function, split function, and then use a with column function. So what they ask in interviews is they give you a file, they will ask you to run a query on top of it. So it's you who need to tell them how you will convert that into a data frame, how will you convert that into a table, how will you run a DSL. हाँ, ये हो सकता है कि वो कहें कि इसको DSL से करो, इसको रजिस्टर टाइम टेबल करके मत करो, DSL से करो. तो फिर हम DSL आपको पढ़ना है. तो and see Py4j, I told you, right? Py4j will be used to convert everything into Java. So ये small चीजें हैं, बहुत important है. ठीक है. और तो DSL तो अभी बहुत बड़ा है ना, मैंने तो आपको सिर्फ सिलेक्ट या सॉर्ट ही बताया. DSL में ग्रुप बाय, एग्रीगेट, सब कुछ है. तो you have to do all those things, right? For example, just go through my GitHub account and जो भी यहाँ पर है वो वाले एटलीस्ट वो सब प्रैक्टिस कर लेना. So there is a basic Spark and advanced Spark. So if you go in advanced Spark, you will see the code, even the data. So you have to focus on these things. Don't go into the ML thing. If you want, you can read it, but yeah, you can follow along all these things. You can read a Parquet file also, right? There is a Parquet file. You can read JSON files also. So like we did read.text, there is read.json, read.parquet. All these functions are available. If you have to read a JSON file, if you have to read a Parquet file. This we already did, right? Like spark.sql. Okay. अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि अगर यही काम आपको डीएस, यही क्वेरी अगर आपको इंटरव्यू में दे दें, इंटरव्यू में क्या होगा, आपको एक क्वेरी दे देंगे मान लो, और बोलेंगे इसको डीएसएल में कन्वर्ट करो. तो डेटा फ्रेम डॉट सी ग्रुप बाय, हाउ टू डू ग्रुप बाय, एंड देन एग्रीगेट. सो एग्रीगेट यू आर यूजिंग टू फंक्शन, सम एंड काउंट, एंड देन डूइंग द शो. सो ये जैसे हमने सिलेक्ट और शॉर्ट किया, ये ग्रुप बाय और एग्रीगेट करने का तरीका है डीएसएल से. तो अब सिर्फ हैंड्स ऑन जितना ज्यादा करोगे उस पे चीजें मैंने बता दी. फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हेल्प करूंगा. तो डू द हैंड्स ऑन as much as you can. It does not matter whether you do it on VMware or cloud, does not matter. Okay Nishtha, getting it? It does not matter where you do it, but कितना आप उस पे प्रैक्टिस करते हो, कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हो, वो मेन है. तो एक बार ये ट्राई कर लेना, जो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है सब डेटा सेट्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब प्रैक्टिस करो. लेकिन इसमें आप देखोगे तो कुछ जो कोड्स होंगी वो, अगर यहाँ स्पार्क सेशन यूज हो रहा है, आप उसको सीक्वल कंटेक्स्ट से करोगे, बस इतना फर्क हो जाएगा आपके कोड में. ये 2.0 का सिंटेक्स है, तो आप उसको स्पार्क सेशन की जगह सीक्वल कंटेक्स्ट से करोगे, दैट्स इट. या फिर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट से करोगे, दैट्स इट. ठीक है. विपुल, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ 2 मिनट. एनीवन, एनी क्वेश्चन? एक चीज और आप लोगों से पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, मतलब हमने ये और ये तो कर लिया, ये वाला पार्ट आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि डू यू नो हाउ टू डू मशीन लर्निंग ऑन स्पार्क. तो आप लोग अपना कोर्स करिकुलम देख लो, एक बार उसमें अगर ये लिखा है तो मैं करवा दूंगा.
कि मशीन लर्निंग ऑन स्पार्क, अगर ये आपके टॉपिक्स में कहीं पे भी लिखा है तो मैं ये करवाऊंगा, अदरवाइज वी विल स्किप दिस। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द यूज केस, जो आपका मतलब यूज केस है इनकी एलएमएस साइट पे इमार्टिकस की, और आई थिंक वो इनसे हो जाएगा विदाउट दिस। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लो, अगर लिखा है एमएल मशीन लर्निंग ऑन स्पार्क तो फिर मैं आपको अगली क्लास में ये टॉपिक भी करवा दूंगा। ओके, प्रोजेक्ट गुलजार, मेरा कहने का मतलब है एलएमएस पे जो प्रोजेक्ट है ना वो आपका स्पार्क सीक्वल का प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग का नहीं है। ठीक है, बट आप देख लो एक बार। अच्छा, कमिंग टू द अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है गाइज, यू कैन ड्रॉप फ्रॉम द सेशन। वी विल कनेक्ट ऑन नेक्स्ट मंडे नाउ। बहुत टाइम है आपके पास, 3 दिन है, पढ़ो अच्छे से। ओके विपुल, मेरे को ना उसका वो भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पे, फिर मैं अगली क्लास में फिर हम पहले एमएल लिब करेंगे और उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई विल डू दैट। ओके, नाउ there is one question from Vipul. How do we define table properties here, such as primary key? NN means क्या, not null and auto increment, right? तो विपुल, ये जो टेम्परेरी टेबल बनाने का पर्पस है उसके पीछे बस ये है कि आप एसक्यूएल चला सको उस फाइल पे। यू कैन नॉट पुट कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट temporary table or view, like you cannot add a primary key, not null or auto increment। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फाइल को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, so that you can run SQL. You cannot put these constraints on it. Okay, that's not allowed. But that's a good question. I'll check कि अगर ऐसा कुछ allowed है, but that's not allowed. Okay, so thank you guys. Next class Monday, MLlib and then the project. Most probably next week आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, in next 2 classes most probably. Okay. Sir, Yes, Nishta. sir, I mailed you the commands that were in the console, but पुराने वाले सब I think वो थे नहीं. I was not able to scroll up. No, that's fine. That's not a problem. अगर वो चले गए हैं तो ठीक है, leave it. नहीं तो आप तो स्क्रॉल sir, अप ना, आप एरो प्रेस करते जाओ तो आते रहेंगे ना सारे। okay. आपको स्क्रॉल अप नहीं करना ना, आप एरो प्रेस करते जाओ, सारे आते जाएंगे, कॉपी करते जाओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके गाइज, वी विल हैव नेक्स्ट 2 क्लासेस। जितने डाउट्स हो पूछ लेना मुझसे, नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके दामिनी, वी आर डन फॉर द डे, यू कैन क्लोज दिस सेशन।